I could able to do. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, have you tried the problems that I have given in last session? Okay. Thus, the solutions. Anybody is there who is facing issue? In any of the problem, any issue? Any- What about negative slicing? Have you guys tried? I have shared you a link in last session. So, have you guys tried to solve that questions? One link I have shared for negative slicing. Anybody is there who has given a try solve those questions? Anybody? किसी ने ट्राई नहीं किया? Okay. So are you guys able to solve negative slicing questions or not? नेगेटिव स्लाइसिंग के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? Okay. ठीक है. Everybody, I am sharing this link again. Everybody, please try to go through it. If you are not able to solve any of the problem or not able to understand anything, please let. ठीक है. बट पहले एक बार ट्राई करना. सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, नो नीड टू वरी. यू कैन आस्क मी. आई विल डिस्कस. Okay. That is the thing. And one more thing, guys. Whatever doubts and problems you guys are having, please put your questions in Q&A so that I can take all those doubts in at the end of the session. Okay. So all the doubts, whatever doubts you guys are having, please put all those doubts related to problems, related to slicing, related to anything. Okay. If any type of doubt is there, please put your question in Q&A so that I can discuss that thing at the end of the session. Okay. And today, let me tell you the agenda of today's session. Today, I will try to cover dictionary, okay, and set. These two I am trying to cover in today's session. Okay, so this is the agenda that we are going to follow. And once I will complete these two things, tomorrow I will directly move with operators, and then in the next session we will start looping ones. Okay, that is sorry, conditional statement. Then your looping statements. So this is the agenda that I am going to follow. Clear, everybody? Shall I start now? Shall I start? ठीक है, ठीक है. Now, today we are going to discuss a new data type that is your set data type. Okay. There is one more data type which is there that is known as set data type. So now we are going to discuss about set data type. Okay. Set data types. Now please remember one thing. When we are talking about set data type, okay, it is also a collection of elements. Set is also a collection of dissimilar elements. Dissimilar elements. Now, when we are talking about list, list is also a collection of dissimilar elements. Tuple is there. Tuple is also a collection of dissimilar elements. Set is there. Set is also a collection of dissimilar elements. Okay. Next thing is how you can represent a set. For example, a set is there. How you are able to understand that it is a set. So for that we are using curly braces. For set representation, we are using curly braces. Curly braces. Curly braces are used
to represent a. Now, most important point. Set is unordered in nature. Set is unordered in nature. Now, anybody please tell me what is the meaning of unordered? Because string is ordered, tuple is ordered, and your tuple and list is your order. But set is unknown. What is the meaning of unknown? What is the meaning of unordered, guys? Unordered. Yes, index is not defined. That means there is no any concept of indexing here. Position का कोई logic नहीं है. There is no any concept of position is there. Okay, so any element is present anywhere. For example, one basket is there. One basket. Let me show you one example of this. Uh, Bags of ball. Now see, this bag is there. Okay, everybody is able to see this bag. Now, anybody please tell me what is the position of this orange basket? This one. What is the position of this orange basket? Are you able to tell? कोई कह सकता है क्या है इसका? This orange position. What is the position of this orange basketball? Anybody? We can't say because there is no any position here. All the balls are there and all these balls are present in basket or a like bag is there. So that is the meaning of unordered. So that means your element will be stored. Multiple elements will be stored inside a set, but there is no any order which is order kuch nahi. All the elements are randomly present. All the elements are randomly present. That is the meaning of unordered. Now, if set is unordered, क्या हम लोग indexing और slicing कर सकते हैं? Can we do indexing and slicing here? There is no any concept of position here. Can we do indexing and slicing? The answer is no, we can't do it. Why? Because there is no any concept of index. अगर index नहीं है आप कैसे करोगे? You can't do it. Okay. So indexing and slicing is not applicable. Is not applicable with respect to because it is not. After this, set is mutable in nature. What is the meaning of mutable? क्या होता है mutable का मतलब? What is the meaning of mutable? Set is mutable in nature. What is the meaning of mutable? Anybody? Mutable क्या होता है? What is mutable? Changeable. Once you are creating it, you can add any element, you can delete any element. So these things are accepted. Okay. So changeable in nature. Changeable. So once you are creating a set, you can add any element, you can delete any element that is accepted. You can. Now most important property of set. एक बहुत important property है set की, that is set does not allow duplicates. Duplicate elements आप store नहीं कर सकते in your set. If you are creating a set, their duplicate elements are not allowed. Okay, if you are giving duplicate elements, अगर आप देते भी हो duplicate elements, in that case, all the duplicate elements will be removed from your set. All the duplicate elements will automatically removed from your set. Let me show. Okay, so first thing is set 1 is equal to set is a collection of dissimilar elements. Let me create one set. Curly braces is used, so I have taken curly braces. After that, your elements. So let me take 10, 10.5, comma high, comma hello, comma false. This is your elements. Okay. Let me check the type of set 1. See. See. Any order you are able to see. अच्छा देखो फर्स्ट पोजीशन पे ये था इनिशियल नाउ व्हाट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन हाई क्या कोई ऑर्डर दिख रहा है आपको यहाँ any fixed order is there at least fixed index is there so all the elements are randomly present anywhere this high will be present anywhere 10.5 is present anywhere your hello will be present anywhere you can't specify where these elements are stored but inside the set ye present hai itna aapko pata hai okay so unordered means there is no any fixed position for any element position koi fix nahi hai kisi element ki all the elements are randomly present in your set that is the meaning of unordered
And if it is unordered, you cannot perform indexing and slicing. ये concept आप apply नहीं कर सकते. You can't perform indexing and slicing because it is unordered image. Okay. After this, set is mutable in nature. That I will discuss later. Set does not allow duplicates. What is the meaning of this state? Right to understand. Suppose that I have taken one more set और यहाँ पे मैं duplicates दे रहा हूँ. See, I am taking hi, I am taking hello, I am taking something like false. ठीक है? Now, if you will see, this high is duplicate, this high is 2 times, this hello is 2 times, and this false is 2 times. Now, if it is a set, agar ye set, then automatically your duplicate will be removed. Agar duplicate had, so automatically duplicates will be removed. अपने आप डुप्लीकेट रिमूव हो जाए. ठीक है. इफ इट इज अ सेट डज नॉट स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स. आपके डुप्लीकेट एलिमेंट्स को छुएगा तब. It will simply ignore that. If it is duplicate, just ignore that. Ignore that. Like that will move. So set does not allow duplicates. Whatever duplicates elements are there, by default, all these elements will be removed if it is a set. ठीक है. Let me show. देखो. यहाँ पे देखो हाई फॉल्स एंड 10.5 कितनी बार आ रहा है? ओनली वन because whatever duplicates are there, this is your duplicate element, remove it. Hello is your duplicate element, remove it. False is your duplicate element, remove. Wherever element is duplicate, just remove. Okay, so remember this. If you are having a set does not consist duplicate store नहीं हो सकता set के अंदर. Okay, there is no any chance to store set a duplicates in set. Okay, so that is up. Now mutable को छोड़ के अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. This point you can skip. Other than this, if any doubt is in any point, if you guys are having issue, please say. Yes, position will be changed. Change हो जाएगी, कोई problem. Let me show you. I am going to use some other ID. मैं दिखा देता. See, right now this is your position. Now I am going to use some online compiler. See the position. False is coming here, but here which one is coming? High is. बदल वो ये नहीं बदलूंगी. See. Okay. Position is not fixed. Okay, position is not fixed. हाँ. This point is clear, guys. क्या ये clear हुआ? Mutable को छोड़ दो. I will explain this. Okay, I will explain this. Okay. आकिब आप लेट ज्वाइन करें प्लीज रिकॉर्डिंग रेफर करिए बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन बिकॉज मल्टीपल पॉइंट्स आई हैव डिस्कस यू विल सी 5 to 6 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस इफ आई विल डिस्कस अगेन 15 मिनट्स विल बी देयर ओके यू कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ यू कैन रेफर रिकॉर्डिंग अप ओके या फिर एट लास्ट मैं रिपीट कर दूंगा ठीक है या एट लास्ट आई विल रिपीट एंड प्लीज ट्राई टू ज्वाइन सेशन एट sharp at 8 pm sharp at 8 pm guys क्योंकि if you are skipping something it is very difficult for me to re-explain that. अगर समझ नहीं आए that is something different I can explain. Okay, but if you are joining late and you are telling that please repeat, that is not possible. Okay. Please explain again, sir. Please. What is the which point you are having issue? देवेश किस point में दिक्कत आ रही है? In which point you are having issue? Tell me. Oh, okay. Sorry, sir. Yeah, देवेश किस पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है बताओ तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूं. शैल आई रिपीट गाइस? इतने सारे पॉइंट है. अच्छा डुप्लीकेट वाला पॉइंट आप कह रहे हो. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट? सपोज दैट आई एम हैविंग अ सेट. ठीक है, सेट इज देयर. नाउ इन दिस सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. सी दिस हाई इज प्रेजेंट 2 times, this hello is present 2 times, and this false is present 2 times. Okay. So duplicate elements are present. So if your set is having duplicate elements,
by default set will always remove those duplicate elements. अपने आप duplicate elements remove होंगे. Okay, so that is the reason when I am printing my set one, you will see no any duplicate elements are present in this. By default, all the duplicates are removed in your set. Okay, so set does not allow duplicate means if you are having duplicate elements, if you are trying to store duplicate element in set as well, that elements will not be stored in your set because set usko by default ignore kar deta. Set will ignore that. Okay, so here also you will see hi, hello, and false is there. This is duplicate. So when I am using set here and I am printing set one, set whatever these things are going to be ignored by set. ये मतलब है. Duplicates will be removed. That is all. It does not have duplicates. If you are trying to give duplicates, automatically those duplicates will be removed with respect to set. That is the only thing. Devesh. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Okay. Fine. So what is set? It is a collection of dissimilar elements, same as list and tab. आप लिस्ट में भी मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते थे, सेट में भी मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर. ओके. Now for representing list, we are having square bracket. For representing tuple, we are having parenthesis. For representing set, we are having curly braces. Okay, curly braces is used to represent a set. After this, set is unordered in nature. Unordered basically means position is not fixed. All the elements are randomly present. Randomly. So here you will see I have given 10 at first position, but in my result 10 is coming at fourth position. Okay. Same as it is false, I have given at fifth position, but here you will see false is coming at second position. Okay. So the meaning is unordered means position is not fixed. All the elements are randomly present. Okay, and because position is not fixed, indexing and slicing is not applicable. आप indexing और slicing नहीं कर सकते. Okay, because it is unordered. Position is not fixed. Okay. After this, set is mutable in nature. Mutable means once you are creating a set, you can perform changes in that. That means I want to add any element in this. Yes, you can do. I want to delete this hello. Yes, you can do. Okay. So addition and deletion, all these things are acceptable in set. Next point is set does not allow duplicates. That means if you are having a set and you are trying to give duplicate elements, then by default all the duplicate elements, जितने भी duplicate elements होंगे, all those duplicate elements will be removed automatically. So here hi, hello, and false is duplicate elements. So in my result, you will see hi, hello, and false is coming only one. Second time, because it is repeating, that's why it is not coming in your set. That are the points. आप सब लोग जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? हम्म. No, multiple elements. Collection of elements. Collection means multiple elements. Set consists multiple elements. 10, 10.5, hi, hello. These are multiple elements. Okay, not single elements. Multiple elements you can store. Okay. Unordered means position is not fixed. Position means देखो यहाँ पे ये 10 हमारी कौन सी पोजीशन पे है? पहली पोजीशन पे. हमारा रिजल्ट देखो कहाँ पे आ रहा है? पहली पोजीशन पे हायर. क्या पोजीशन फिक्स है यहाँ पे? नहीं है, अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट. आपकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं. ठीक है, पोजीशन स्पेसिफाई नहीं. दैट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्ड. बताया ना, अभी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं है. एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे फोकस करो. आई एम हैविंग 10. 10 is present at first position. Okay. In your output, if you will see 10 is coming at fourth position. How this position is changing? Because it is unordered in nature. Unordered means position is not specific. आपकी पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है. ऑल द एलिमेंट्स आर randomly present. Randomly. See here, if I am running same code here, you will see your first element is 10, but in your result you are getting first element as false.
That means your elements are not fixed. All the elements are randomly present. That is the meaning of unordered. Randomly present. Randomly. That is the meaning of unordered. बस इतना. Curly braces means this one, this bracket. This is known as curly braces. देवेश अब क्लियर हुआ आपको? देवेश, is it clear? We cannot fix this, Nitesh. We cannot fix position. It is not possible because set is unordered in nature. Unordered means position is not fixed. You cannot fix position as well. If you want to fix position, you are having less than tuple. Okay, position fixed nahi kar sakte Nitish hum log set. Okay, all the positions are randomly present. Okay, all the elements are randomly present. You can't specify the position. Creation of set object or set data type, whatever you can say, you can say. Now, if you want to create an empty set, if you want to create an empty set, so for that you need to use S is equal to this. So what it will do, it will create an empty set. It is your empty set. Now, if you know the element, if we know the element, अगर आपको element पता है, if you know the element, in that case, S is equal to curly braces, and here you can put your elements, whatever elements are. So these are your elements. Okay. So if you want to create an empty set, this is a way to create an empty set. First point. Next point is if you know the elements, then you can put those elements in curly braces. Curly braces. Okay. Now let me show you one example with this. S is equal to set, and I am checking what is the type of. See the type. See the type set. It is of set type. Same as it is, if I am taking this example, it is also your set. Okay. See, bracket is this. Yeah. See, it is also set. So if you want to create a set, so for that, if you want to create an empty set, this is a way. This is a way to create an empty set. If you know the element, then you can simply use curly braces for set representation. That is the only thing. Ask your doubts. Is it clear? Creation of set object is clear. सबको क्लियर है कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल टू वेज आर देयर, एम्प्टी सेट एंड यू नो द एलिमेंट. If you know the element, then you can pass that element in curly braces. Okay. Now, I told you that set is mutable in nature. Mutable in nature means once you are creating a set, you can perform addition in that. You can perform addition in that. So how we will do it? We will do it with the help of insertion methods. What are those methods? First method is your add method. Add method. This is one method. This is one method which is used to add an element in your set. For example, this is my set and I want to add some element in this. मुझे कोई element add करना है. Okay. So what we are going to do? So let me write definition first. This method is used to add an element inside a syntax is set name dot add and your element. Now this is your set and I want to add some element in this. मुझे कुछ element add करना है. How we will do it? S dot add of. Now here you can pass your element. Which thing you want to add? I want to add Python. Okay. And after this, I am going to print my S value. See, Python is added. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कैन वी स्पेसिफाई एट विच पोजीशन आई वांट टू ऐड पाइथन? क्या मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि किस पोजीशन पे मुझे पाइथन ऐड करना है? कैन वी स्पेसिफाई? जस्ट थिंक, कैन वी स्पेसिफाई? द आंसर इज नो.
बिकॉज ऑल दी जहां जगह मिलेगी वहां चला जाएगा. For example, I have given you that example. Bag of balls. I have shown you this example. Now, suppose that this bag is there. Okay, this bag is there. Now, if some new ball is coming, then can you specify the position that in this position only you can just put this ball? No, you can just put anywhere, wherever place is there, and your ball will be. Same thing is here. There is no any position in your set. Your element is present, but where it is present, you can't discuss. आप नहीं कह सकते हो कि किस पोजीशन पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट. Okay, so that is the meaning. So here we can add an element. An element means one element. Position you cannot specify. कहीं भी add हो जाएगा. Okay, let me show. See here. Here it is added at fourth position. See here at which position it is going to add. कहाँ add हुआ? Third position. But here you will see it is added at. Okay, so position you cannot specify. At any position your element will be added with the help of this add method. Ask you doubt in this add method, and only one element you can add at a time. एक element सिर्फ add होता है इसमें. Next doubt. Clear? Add method. क्या add method clear हुआ कि नहीं हुआ? मैं प्रॉब्लम्स भी दूंगा इससे रिलेटेड, तभी मैं सेट को कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके तो मैं प्रॉब्लम्स करा पाऊँ. Fine. Next case. So next is there is one more method which is there, that is known as update method. For adding, there is one more method which is there, that is known as update method. Basically, what update will do? What I want is whatever elements are present in second set, all those elements I want to add in first set. You can do with the help of update. What is the meaning of this? This method is used to add the elements of second set into first set. सेकेंड सेट के एलिमेंट आपके फर्स्ट सेट के अंदर ऐड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट मेथड. Okay, let me show you this. So here you will write set 1, that is your first set where you want to add the element, dot update, and from which set you want to add element, that is your set. So ये क्या करेगा? Whatever elements are present in set 2, all those elements will be added in your set. अब किसी का डाउट आएगा कि सेट 1 और सेट 2 कहीं पे भी अगर डुप्लीकेट होता है तब क्या होगा? लेट मी शो यू वन सिंपल. फर्स्ट लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल. सेट 1 is equal to, this is my one set. Set 2 I am giving, which is like 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. Now print में set 1 dot update set, and then I am going to print set 1. See what it will do. Whatever elements are present in second set, all those elements will be added in your first set. सारे elements आपके first set के अंदर add हो जाएंगे. Let me see this. And one more thing, position is not specified. यहाँ पे elements तो add होंगे, but किस position पे add होंगे you can't see. Okay, so whatever elements are present in this, all these two are combined together and you are getting the. That is all. Now someone can ask, if I am having duplicates, for example, duplicate means suppose that I am having here 10, here I am having 10.5. अब क्या होगा? Try to understand when you are using update. So update means whatever elements are present in first set, so second set, those elements is going to be added in first set. But first जो है वो set type का है, so automatically आपके duplicate remove हो जाएंगे. देखना डुप्लीकेट आपके, देखिए 10 आपका डुप्लीकेट है 2 बार, तो इस वजह से एक ही बार आ. Even after combining, you will see it is there in 2 times, but still you are getting 1 time. Why? Because it is set. Set does not allow duplicates. Even if you are combining 2 sets as well, it is what? It is just combining 2 sets. Whatever elements are present in second set, I want to add those elements in first set. It is also combining 2 sets.
In this case also, if any element is duplicate, that also will be ignored with respect to C, because duplicacy is not allowed. In case of set, duplicacy is not allowed. Whereas in case of list and tuple, you can add duplicate elements, no any issue. But set duplicate को allow नहीं कर. Set does not allow duplicates. So here, after combining also, you will see 10 is there, 10 is here, 10 is here. But still in your result, one time 10 is coming. Why? Because after combining also, it is removing duplicates. Wherever duplicate is there, all these duplicates just remove them. So it is removed. So that is your update. So it will also it will add the element of second set, elements of second set. जो भी आपका second set होगा, और second set कौन सा होता है? This is your second set. And these elements will be added in your first set. That is your this. Now ask me. In add and update, if any doubt is there, please let me. In add method and update method, if any doubt is there, please let me. Clear everybody? सबको clear है? ठीक. After this, we are having deletion method. So these are your only two insertion methods आते हैं, क्योंकि हम position के basis पे कभी यहाँ पे insert नहीं कर सकते. Okay, so these are the two methods we are having for addition. Now same as it is for deletion, we are having deletion of deletion in set object. Okay. So if you are having a set, you want to delete some element from that set. Now again same question. Can I delete any element with respect to position? That मुझे ये second position वाला element हटाना है. Shall I do that? Shall I do that? Position के basis पे deletion हो सकता है क्या यहाँ? Can we delete? The answer is no. You can't delete. You can't delete. So here also we don't have any function which will delete based on the position. Okay. So now how you are going to delete? So there are three methods which are there. And one more method is there. Let me check that method. मैं check भी कर लें. I just remember that. But, fine. Got it. Got it. Remove. First method is your remove method. So what remove method is doing? Whatever element you have given, here, only that particular element will be deleted. जो भी element दोगे आप इसमें, that particular element will be deleted. So this method is used to delete a specified, or you can say delete a given element from the set. Now, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है guys, let me clear that. If the given element is not present, then what will be answer? Then we will get an error. Please remember this, very important point, because एक और method है जो इसको overcome करेगा. Okay, so remember this. What this method is doing? This method is deleting a given element. जो आप element दे रहे हो, that element will be deleted with the help of this method. So set underscore name dot remove, और यहाँ पे जो भी आप element, whatever element you are giving, that element will be deleted from your. Okay, let me show. Set one dot remove. अब इसके अंदर मुझे क्या देना है? Element. Which element you want to delete? Suppose that I want to delete Python. That's what this will do. This will delete Python from your set. See, Python is. अभी your second point is बहुत important. This point is very important. See, if the element is not present, now try to understand. I am giving a small. Now tell me, will this Python is present in your set? Will this Python is present in your set? क्या ये Python present है आपके set? It is not. It is not. Now in this scenario, what will be the result? Your result will be an error. See, an error. Your result is an error. यहाँ पे क्या आ रहा है? Error आ रहा है. Okay. So this remove method is there that will delete the given element. That is fine. But if the element is not present, it will give an error.
So with respect to that, एक similar method है इसी के, that method is known as discard method. Discard method. This method is very, very important. Try to understand. Okay. Discard method. This method is also similar to your, or this method is similar to your remove method. Same method. What is the change here? Try to understand. Only one difference. If the given element is not present, then discard method will not do anything. Discard method will not do anything, anything, and also we will not get any error. We will not get any. अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आता है? What is the difference between discard and remove? The difference in between discard and remove is, in case of remove, if the given element is not present, your answer will be an error. But when we are using discard method, and if the element is not present, you will not get any kind of error. Instead of the error, discard will not, कुछ नहीं करेगा discard. Okay, discard will not do anything, and also it will not give you any error. Let me show. देखो Python तो इसमें present है, so it will delete that. Suppose that I am giving something like Java. So Java is not present in this. But when we are using a remove method, we are getting an error. But when we are using this discard method, we will not get any kind of error. तो नहीं है. Nothing. It will not do anything. See, any error we are getting, anything we are getting, कुछ नहीं कर रहा है. Okay. If the element is present, it will delete that. If the element is not present, it will not do anything. So the difference between discard and remove method is, when we are using remove and the element is not present, we will get an error. And if the element is present, like if the element is not present and we are using discard, we are not going to get any kind of error. That's it. Ask your doubts with respect to discard and remove. अगर डाउट है रिमूव एंड डिस्कार्ड में प्लीज लेट मी नो एंड आस्क. Simple सा है. The element is present. Sir, these methods are only, yes Nishi, these methods are only applicable for set. ठीक है. So whatever I am discussing is this is respect to set only. ये सब set के लिए applicable. Any question, anything you guys want to ask, please let me know. सबको clear है? Everybody? ठीक है. Now there is one more method, and even I am calling it as useless method. मैं इसको useless method भी कहता हूँ. That is pop method. Now why I am calling it as useless method? The reason is, this method is there which will randomly delete anything from your set. ये कुछ भी delete कर देगा. Anything it will delete. Okay. So this method will delete any element from your set. इसका यूज नहीं होता क्योंकि कुछ भी जो भी मिलेगा इसको ये उड़ा देगा. Okay, it will delete. This method will also return the deleted bit. तो इसका यूज रियल टाइम में नहीं करते हैं. We are not using this method. The reason is it will delete anything. जो मिलेगा इसको ये उसको हटा देगा. Okay, so it will delete anything. You can't specify which element is going to be deleted. So set name dot pop. You can't specify which element is going to be deleted from your set. Okay, so this method will delete any element. कोई भी element ये हटा दे. Okay, let me show. I have written pop print set 1. Let's see which element is going to be deleted. क्या delete हो गया? High is deleted. High is deleted. Same as it is if I am using something else. See, क्या delete होगा यहाँ पे? False is deleted. कुछ भी delete कर देता है. That is your pop method. Ask your doubts in pop. These three are your deletion methods. Pop, update, and this. Ask your doubts. Ask your doubts. If element not positioned in pop, the answer will be an error. If your set is empty,
If your set is empty and you are trying to perform pop operation, you will get an error in that case. See, अगर मैं यहाँ पे set one dot pop करता हूँ, we will get an error. Directly we will get an error because your set is empty, and in empty set we can't perform this. See, pop from empty set. From empty set you cannot use pop operation. Okay, the answer will be an error. Yeah, you can say, but हम लोग pop use नहीं करते हैं. It will delete anything. It will delete anything. कुछ भी delete कर देगा ये. Difference between pop and remove. Remove will delete the specified element. Whatever element I have given here, only that particular element will be deleted with respect to remove. But when we are talking about pop, pop will delete anything. Anything means in your set, this is your complete set. Which element is going to be deleted? आप नहीं बता सकते. कोई भी element delete हो जाए. So here you will see high is deleted, but यहाँ पे देखो क्या delete हो गया? False delete. Okay, so that is the difference. Ranjit. Yeah, random deletion you can see. Random deletion. Anything will be deleted. हाँ Ranjit, is it clear? Remove is deleting that particular element which we have given. जो आप दे रहे हो remove उसको delete करता है. Pop क्या करता है? कोई भी element को delete कर देगा. Everybody is comfortable with deletion function. Everybody is comfortable with deletion function. क्या सब comfortable हो? Oh. Now after in the list pop method it is deleting from the last. Yes, in list it is deleting from the last, but set में ऐसा नहीं होता. Okay. In list pop is deleting the last element, but set में last element delete नहीं होता. कोई भी element delete हो जाता. Okay. Fine. Now set is mutable in nature. How we can prove it? So for proving कोई भी method लें. कौन सा method लेंगे? For proving which method you want. I want to show you whether these changes are done in your original set or not. So which method which method you want to show this? Add le, remove le, discard le. Which method you want? Add. Okay, let's take add. Add method. Okay. Now this thing is there. Okay. Now see here. This is my set which is there. What I am going to do? I am going to check what is the memory location of this S. किस memory location पे ये S present है? I am going to check. And after addition, जब मैंने ये method apply कर after this I am going to check my memory location. If both the memory locations are same, इसका मतलब क्या होगा? This means that whatever things I am doing here, that thing is going to be done in your original set only. आपके original set में ही changes हो रहे हैं. अगर दोनों की same आती है memory location. If both the memory locations are different, that means what is the meaning of that? That means both are different. That means that changes is not going to be done in your original object. Same object में changes नहीं हो रहा है, कोई नया data type create हो रहा है, फिर change. Okay, see, both are same. Both are same. Why both are same? Because sets are mutable in nature. Mutable means once you are creating a set, you can perform addition in it. And I am trying to perform this. I am trying to add this Python in it. Yes, you can do it. That is your example. So in theory, if you want to write, you can write like set is mutable in nature. Set is mutable in nature. That means whatever addition and deletion of elements we are doing in set is going to be done into the original set objects, and that is the reason the memory location after performing the operation is same. Memory location आपकी same रहेगी. That is okay. Set is mutable in nature, clear हुआ?
सिंपल सा चीज है, ये सब चीजें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. सेम चीज आई एम जस्ट रिपीटिंग. हम्म. कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे किसी को भी. इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर प्लीज से. ठीक है ठीक है ठीक है. इज देयर एनी यूज ऑफ, नो नो यूज नहीं रहता है. कोई यूज नहीं रहता, बस यहाँ पे प्रूफ करना है ना, अगर शो करना है आपको किसी तो आप शो कर सकते हो इससे. ठीक है, इसका यूज कहीं नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनी वे फॉर जस्ट प्रूफ, लाइक इट इज जस्ट फॉर प्रूफिंग. ओके, जस्ट फॉर प्रूविंग वी आर हैविंग दिस. ठीक है, इसका यूज नहीं है कहीं. फाइन. सो आफ्टर दिस which part is remaining? हाँ, operators used in set. Operators used in class 11 chapter 1. हाँ, chapter 1. Class 11 chapter 1. What are the mathematical operations we are having set? किसी को याद है? What are the mathematical operation we are having with respect to set? Class 11 chapter 1. 2. Yes, union, intersection, all those things. Union, intersection, all those things. प्याली आपको म्यूटेबल क्लियर नहीं हुआ क्या? प्याली, you are having doubt in mutable. Is it clear? ठीक है. So there are multiple operation. So first is your union operation. Union operation. ठीक है. Next we are having intersection operation. Intersection. Cooperation. Then we are having difference operation. Difference operation. Then we are having symmetric difference operation. ठीक है. These are the famous operations which are there. These are the famous operations which we are having. Symmetric. Okay. Now union. What is the meaning of union? Union means union operation. Union operation will return all the elements from both the sets. Both the sets. So दोनों sets के element आपको union में मिलते हैं. What is the meaning of that? Try to understand. Suppose that I am having two sets. These are our two sets. Okay. These are our two sets. Now what I want to get all the elements from first set, all the elements of from second set. मुझे फर्स्ट सेट से सारे एलिमेंट चाहिए एंड सेकंड सेट से सारे एलिमेंट चाहिए, एक्सक्लूडिंग डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट. कहीं पे भी डुप्लीकेट नहीं आएगा सेट में, याद रखना इस चीज. whatever you are doing whatever you are doing, your duplicate will not take place anywhere. Your duplicate will not take place. Okay. Now set one dot union set. So what it will do, it will give all the elements of from first set, all the elements from second set, excluding duplicate. डुप्लीकेट आपके रिमूव हो जाएंगे, ये चीज याद रखना आपने. एक्सक्लूडिंग duplicates. So whatever duplicates are there, all the duplicates will be removed. Let me show you. Set one dot union set. ठीक है. See. See. Both the set elements will be combined together. Okay. ये है हमारा union. Union means whatever elements are present in first set, whatever elements are present in second set, combine those two things. But if any duplicate elements are there, exclude that duplicate elements. That is enough. Ask doubts in union. ये क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है वैसे. In class 11 sets we have discussed, like we have already learned this. Yeah guys.
हाँ, यही क्वेश्चन मुझे चाहिए था। आर्यन, आई विल टेल, आई विल टेल। इज सेम मेथड विद अपडेट, आई विल टेल जस्ट। सबका डाउट वही आ रहा है। आई विल टेल। अपडेट ये क्लियर हुआ यूनियन, पहले ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ अपडेट और यूनियन में कहाँ पे अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड यूनियन, आई विल टेल, जस्ट होल्ड ऑन। यूनियन इज क्लियर एवरीबॉडी। नाउ द डिफरेंस इज व्हाट। अब कोई एक क्लू बताना, जो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट वन के अंदर जा रहे हैं, ओरिजिनल सेट के अंदर अपडेट हो रहे हैं? आंसर है नो। यहाँ अपडेट फंक्शन जो है वो ओरिजिनल सेट के अंदर चेंज करता है, बट जब आप यूनियन यूज करते हो, यूनियन विल क्रिएट अ न्यू, यूनियन विल create a new set object after combining. After combining, proof कहाँ है? You will ask for proof. Definitely you will ask for proof. Let me show you proof as well. Take look proof by. See, what I will do is, before that I am going to print my set one address. मैं एड्रेस सेट कर रहा हूं दोनों का। ओके, एंड हियर आल्सो आई एम गोइंग, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस, मैंने ये चेंज जब कर लिया है, I have done this change. After this, I am going to check the memory location of this ID. ठीक है, इसकी मेमोरी लोकेशन चेक कर, सेम है या डिफरेंट है? सी, इज इट सेम और डिफरेंट? एंड एक और चीज आप चेक कर सकते हो, मैं प्रिंट सेट वन कर रहा हूं, देखना सेट वन में कोई चेंज हुआ है क्या? क्या सेट वन हमारा बदला है? देख, बट यहाँ पे तो सेट वन बदला था। देखो अपडेट में, जब मैंने अपडेट का एग्जांपल लिया था, देखो मैं सेट वन को प्रिंट कर रहा था तो हमारे सेट वन में चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे देखो ओरिजिनल सेट में चेंज हो रहा है क्या? देख, हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। That is the difference. So difference is union. When you are using union operation, it will create a new set after combining. Combine करेगा, फिर एक नया set बनाएगा, उसके अंदर store करेगा. In your original set, these changes are not there. Remember, that is the difference between update and here union. That is the difference between update and. अब समझ आए? Union will combine. Union will combine, but it will change. It will take it in different way. हाँ, why set it also set? Set is mutable है. सेट म्यूटेबल है, बट जो उसमें फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही, देखो कोई चीज अगर चेंजेबल है तो उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हमको ओरिजिनल में चेंज करना है या फिर नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें क्रिएट चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना यूनियन, इसकी फंक्शनैलिटी ऐसे है कि नया ऑब्जेक्ट बनाओ फिर चेंज। बट कि जो यहाँ पे फंक्शन लोग यूज कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉप यूज किया है, पॉप की फंक्शनैलिटी क्या है कि जो ओरिजिनल सेट है उसके अंदर चेंज, ये फंक्शनैलिटीज के अंदर डिफरेंस। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज के अंदर डिफरेंस। तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी यूनियन की है, वो ये कहती है कि जो भी ऑपरेशन कर रहे हो वो नए सेट के अंदर, ओरिजिनल सेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस द फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी की वजह से हो रहा है। ओके, यूनियन फंक्शनैलिटी व्हिच यू आर यूजिंग ना, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग। फंक्शन में हैंग कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, मीनिंग हैंग कर, चेंज कर सकते हैं नहीं, because these are inbuilt functions. These are inbuilt function. Union is your inbuilt function. You can't perform change in this. You can override it. That is something different that we can do. Override कर सकते, but you cannot change this because it is inbuilt. Union function is inbuilt. If you want, you can create your own union function. Then you can use it. That is ठीक है, तो इस वजह से ये चीज हुई। सेट हमारा म्यूटेबल है, बट उसमें जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है ना, वो तो कोई भी चीज कर सकता है ना, वो नए सेट में भी बना सकता है, वो चाहे तो उसी सेट के अंदर कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी वेदर दैट चेंजेस इज गोइंग टू बी डन इनटू योर ओरिजिनल सेट और अ न्यू सेट विल बी क्रिएटेड। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी। ठीक है, अपेंड फंक्शन आर डिफरेंट। आप नीतीश कहाँ हो? ये सेट चल रहा है, अपेंड लिस्ट में था, लिस्ट खत्म हो गया है, अपेंड कहाँ से आ गया यहाँ? We don't have append method here. Append method is not there in this. Okay, we don't have any append method here. ठीक है, हाँ गाइस, क्लियर हुआ? प्रांजल, अब आपका डाउट क्लियर हुआ? ये फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि नए सेट में चेंज करना है या ओरिजिनल में करना। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी, व्हाटएवर फंक्शनैलिटी वी आर यूजिंग, इट डिपेंड्स ऑन दैट।
Fine. So after this, we are having intersection. Anybody, what is the meaning of intersection? Intersection तो बहुत simple है. Anybody, what is the meaning of intersection? Intersection means common elements between two sets. Two sets are there. Between these two sets, what are the common elements which are there? So if you want to get common elements between two sets, you will use this function. You will use this function. Okay, let me show you this. Okay. Now, this is my set. Okay. So here I am going to take common elements like 10, 10.5. Okay. Now I am going to check, I am going to use intersection. Intersection. So what we will get is, we will get the intersection of these two. See, intersection is 10. 10.5 मैंने लिखा था. Okay. 10 and 10.5, because 10 and 10.5 are the common elements between these two sets. So common elements अगर आपको चाहिए, you will get with the help of intersection. But यहाँ पे भी same चीज होती है. Your new object will be created. Your new object will be created. That's why you will see in your set 1 no any changes there. Set 1 के अंदर कोई बदलाव नहीं आया. It is same only. Okay, there is no any change in set 1. Set 1 is fixed. But whatever you have done is this is going to be done in your new set. When new set is created, then you are going to do perform. You are going to get common elements. That is your intersection. हाँ, ask your doubts in intersection. अगर इसमें कोई doubt है तो अगर कोई common नहीं है, you will get empty set. If no any element is common, you will get empty set as a result. See, no any element is common. Empty set is your result because no any element is common. If no any element is common, empty set is your result. हाँ, intersection में doubt है तो बताओ. In intersection, if you guys want to ask any question, please let me. Clear है कोई? इंटरसेक्शन क्या कर रहा है? हाँ, न्यू सेट यहाँ पे भी न्यू सेट बन रहा है. ठीक है. इट इज ऑल्सो इवन मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कुछ भी लगाओगे ना, कहीं पे भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर लगाते हो, वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है हमेशा. whenever you are trying to perform mathematical operation, हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है. Okay, always a new object will be created whenever you are trying to perform mathematical operation. For example, addition. आप addition कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बनेगा. सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बनेगा. मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी आप करते हो ना, तब एक नया ऑब्जेक्ट बनता है. Shall we move ahead, guys? Next function. डिफरेंस क्या करता है गाइस, किसी को पता है? सर यू सेड सेट विल एक्सेप्ट यूज ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मींस, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा है, एक सेट के अंदर नहीं निकल रहा है. अमृता, see here, intersection means two sets. Between these two sets, what are the common elements which are there? So that you are getting with intersection. Duplicate means within a set, your duplicates are not allowed. Within a set, your duplicates are not allowed. Okay, that is the meaning. Amrita. Both are different. Intersection will work with the two sets. But duplicacy means within a single set, your duplicates are not. That is the meaning. Are difference. Element of first set that are not in second set. Correct. Correct. Basically, difference will return the elements which are present in first set but not in second set. फर्स्ट सेट के अंदर प्रेजेंट हो बट सेकंड सेट के अंदर ना प्रेजेंट हो, दैट यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस. ओके,
फर्स्ट सेट के अंदर आपके एलिमेंट प्रेजेंट हो बट सेकंड सेट के अंदर वो एलिमेंट ना प्रेजेंट, दैट यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ, लेट मी, एक क्वेश्चन भी मैं दूंगा इससे रिलेटेड, ओके, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस। Set 1 dot difference of set 2. Yeah, this is a function, and let me take this example. Okay, now see, this is my set 1 and this is my set. I am going to apply difference. What is the meaning of difference? Your first set is set 1. आपका पहला set कौन सा है? Set 1. So what it will return? All the elements present in first set. First set के सारे एलिमेंट करेगा, बट सेकेंड एलिमेंट की, सेकेंड सेट की एक भी एलिमेंट नहीं, और कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं करेगा. सो कॉमन एलिमेंट्स आर व्हाट? दिस 10 is your common element and 10.5 is your common element. So common element will be removed. First your common element will be removed. After removing common elements, whatever elements are present in first, that will be your result. See, 10 and 10.5 are your common elements. Remove that common elements. After removing that common elements, whatever elements are remaining in your set 1, that is your result. And यहाँ पे भी ये चीज होती है. It will also create a new object. It will also create a new object. Okay. Difference will create a new object. Will create a new set object. ठीक है. So what is the meaning of this? Try to understand. Remove common element. जो भी common element है आप उसको पहले सेट से remove करो. After removing that, whatever elements are present in first set. So what are my common elements? 10 and 10.5. Remove that common element. So 10 and 10.5 will be removed. So after removing, what elements are remaining in set 1? High is remaining, false is remaining, Python is remaining, hello is remaining. So that is it. So what difference is doing? Common elements को आप remove करो. After removing that common elements, whatever elements are remaining in your first set, that will be your first. Ask your doubts in difference. अब difference में किसी को doubt तो आप union, intersection and difference. If any doubt is there, please let. Yeah. Difference. Okay. See, this is my first set. This is my second set. दो सेट है हमारे पास. ठीक है. मैंने डिफरेंस ऑपरेशन अप्लाई किया. What is the meaning of difference? Difference means remove common elements between the two sets. So common element इन दोनों सेट में क्या है? पहले तो ये 10 है और 10.5. तो कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर. सो 10 एंड 10.5 विल बी रिमूव. कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद फर्स्ट सेट में बचा, फर्स्ट सेट में बचा हाई, फॉल्स, पाइथन एंड हेल्प. वो हमारा रीजन. इसका मतलब बस क्लियर हो. After removing common elements, whatever elements are remaining in first set, that will be your result. Everybody is comfortable? Let me make up. प्लीज रिवर्स द पोजीशन ऑफ सेट. अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपका सेट 1 बदल जाएगा, सेट 2 बदल जाएगा. सो इन दैट केस योर रिजल्ट विल बी डिफरेंट. See, if you are taking set 2 difference set 1, now in this case what will be the result? Try to understand. Now this is your set 1. अब ये आपका set 1. That means common elements between these two sets, common element is 10 and 10.5. So आप common element remove कर दोगे first sets. What is my first set? Now set 2 is your first set. Because जो आप लिखते हो difference से पहले, that is your first set. Now set 2 is your first set. So after removing duplicate, after removing common elements, what is remaining? 3, 4, 5. So that is your result. जो आप पहले यहाँ पे लिखते हो ना, that is your first. स्पीड थोड़ी स्लो. ये आसान है, मैथमेटिक्स है नॉर्मली. इंटरसेक्शन और ये सब चीजें तो इजी है वैसे.
क्या फास्ट चल रहा हूँ मैं, स्लो हूँ? किसको किसको लग रहा है तेज हो रहा है? अच्छा तेज हो रहा है, चलो ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। हो जाता है, मुझे लगा आप लोग कंफर्टेबल हो तभी। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या है इंटरसेक्शन। इंटर यूनियन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। देखो यूनियन क्या करता है, दो सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट में आप सारे एलिमेंट्स पहले सेट के, सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट कंबाइन। ओके, दोनों सेट के, दोनों पार्ट्स के, दो दो सेट है हमारे पास, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो और रिजल्ट। सो यूनियन क्या करता है, दोनों सेट को कंबाइन कर देता है और आपको रिजल्ट देता है। बट ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपका ओरिजिनल सेट के अंदर नहीं होता है, एक नया सेट बनता है उसके अंदर ही होता है। तो इसका मतलब होता है यूनियन। कमिंग टू द इंटरसेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? Two sets are given, so out of two sets, whatever common elements are there between the two sets, that will be your result. So if you will see these two, this is my first set, this is my second set. So in these two sets, what is my common elements? 10 and 10.5. These two are your common elements. So after common, like if you are applying intersection, you will see you are getting only common element. So intersection will give you common elements between the two sets. When we are talking about difference, difference means whatever elements are present in set 1, after removing common element, कॉमन एलिमेंट को आप हटा दो, उसके बाद सेट 1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपके पास, वो सारे आपके आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? राइट टू सेट 1 इज, दिस इज योर सेट 1। ओके, ये हमारा सेट 1 है। In this set 1, if you will see, what are my common elements between set 1 and set 2? 10 and 10.5. This is your common element. ये आपकी कॉमन एलिमेंट है। आप सेट 1 से, सेट 1 कौन सा है? दिस इज योर सेट 1। आप इससे कॉमन एलिमेंट्स को हटाओ, दैट इज 10 and 10.5। सो जस्ट रिमूव कॉमन एलिमेंट। जब आप कॉमन एलिमेंट को हटा दो, तब क्या बचेगा आपके पास? हाई बचेगा, फॉल्स बचेगा, पाइथन बचेगा, हेलो बचेगा। दैट विल बी योर रिजल्ट। नाउ अगर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, देखो जो भी आप पहले देते हो यहाँ पे, वो हमारा पहला सेट, जो हम यहाँ पे देते हैं ना, वो हमारा पहला सेट होता है। तो यहाँ पे हमने सेट 2 दिया है, अब क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट में निकाल। तो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 10 एंड 10.5। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना है किस सेट से? ये हमारा पहला सेट, इससे हम रिमूव करेंगे। तो इससे रिमूव करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या? 3 4 5। दैट विल बी योर रिजल्ट। बस इतना है। समझ आया गाइस? Difference and intersection, yes, yes, Pranjal. Difference and intersection both are opposite to each. Intersection means common element, difference means common elements remove that, and whatever elements are remaining from first set, that you will get. थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। Everybody is comfortable now. AD Durga, is it clear or not? ठीक है, अगर स्पीड तेज हुआ करे बता दिया करो guys, ठीक है? अगर कहीं पर प्रॉब्लम लगा करे बता दिया। ठीक है, समझ आना चाहिए, मेन चीज वो है। नाउ आफ्टर दिस, सिमेट्रिक डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस? एनीबॉडी, एनी आइडिया अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस? क्या होता है? किसी को आइडिया है सिमेट्रिक डिफरेंस? एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर सेट। ओके, ओके, सी symmetric difference means, symmetric difference means remove common elements from both the sets, remove common elements from both the sets, जो भी common element है उनको remove कर, and then combine the elements, and then combine elements from both the sets। अब कॉमन एलिमेंट्स आपके पास जो है उसको आप रिमूव कर दो, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं यू कैन जस्ट रिमूव दैट। सो सेट अंडरस्कोर नेम डॉट
SYMMETRIC underscore difference set. Okay. Set one dot symmetric difference set. Now see, try to understand. Just remove common element between these two sets. So common elements are 10 and 10.5. These two are common elements. Remove that common elements. आप remove कर दो उन common elements. After removing that common elements, whatever elements are present in first set as well as in second set, that will be used. That means आप common sets, common जो elements है, उनको हटा रहे हो from both the sets. From both the sets. So if you are having a common element from both the sets, just remove that common elements and after that combine these two elements together. Now if you will see here, your common element is 10 and 10.5. ये दोनों common element है. तो क्या करना है? Remove common element from both the set. मैंने दोनों सेट से common element को remove कर दिया. After removing, what we need to do? Combine the elements of both the sets. That means this high is there, false is there, then 10 is there, sorry, Python is there, hello is there. ये चार एलिमेंट पहले सेट में बचे हैं और 3, 4, 5 is remaining from second set. That will be your result. Okay, so remove common elements. After removing those common elements, combine the elements of both the sets. That's it. Ask your notes. This is your symmetry. Union minus intersection is correct. Union minus intersection means symmetric difference. This operation used for more than two sets? No, only for two sets we are using this. Only for two sets. We cannot use this operation for multiple sets. No, only for two sets you can apply this operation. Once you are getting the result of two sets, then you can use that with third set, then you can use. ठीक है, आप दो का रिजल्ट ले लो, उसको तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करा लो, then you will do. वो कर सकते. What if we have set 1 symmetric, set 2? Symmetric, what symmetric is doing? Symmetric will return the symmetric function hota hai. I don't think any function is there which is symmetric. Let me check. Even in real time, I am not using symmetric, but still someone is asking for symmetric. I don't think symmetric is any method. Symmetric आपका method नहीं है. It will give you an error. Mohammad Shahid. Symmetric is no any method. ठीक है? ये error देगा. आप जो लिख रहे हो ना, आप लिख रहे हो सीधे symmetric. It will give you an error. Okay. So there is no any method named as only symmetric. You need to write symmetric difference. Then you will get the result. There is no any method. हाँ, अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसी को डाउट है तो फिर क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको लिख देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. Everybody is comfortable. Shall we take question now? ये पूछा गया है, रियल टाइम क्वेश्चन लेने वाला हूँ. ये टीसीएस में पूछा गया है. In TCS, this question has been asked. Okay, let's take one example. Just a moment, guys. Problem आपकी कहाँ से ये आएगी? Set and function. Give me a moment, guys. I am taking problems. हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, कर ले जाओगे इस प्रॉब्लम. Just try to understand what this problem is trying to say. हाँ, this is the problem. If you will see this problem, what this problem is saying. Write a Python program which will return all the different unique vowels. आपको unique vowels सब constraint भी है यहाँ पे. These are nothing but the constraint of your. Some constraints are there. This is your constraint. But right now I am not focusing on constraint. मैं constraint पे focus नहीं कर. Okay. So this point I am going to skip. Only 2 points I am considering. Okay.
अब देखो यहाँ, write a Python program which will return all the different unique words. That means if you are having some string, if you are having some string, for example, string one is equal to कोई string है हमारे, for example, I am taking some hello world, simple string I am taking. अब समझ, string can be upper case and lower case, it can be anywhere, इधर upper भी हो सकती है, lower भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. What you need to do, you need to find unique vowels. Unique vowels कितने हैं ये find करना है आपको. Okay, so how many unique vowels are there? So vowels are your A, E, I, O, U. These are what? These are your vowels. And one more condition they have given. If any string is having n repeating characters, अगर कोई string में n repeating characters हैं, तो हमको उसको सिर्फ एक बार consider करना. We need to consider it only once. What is the meaning of this? Meaning of this means if you will see this string, L is there multiple times. L जो है वो multiple time. तो हमको सिर्फ एक बार L को consider. We need to consider L only one time. See, H is only one time, E is only one time, L is multiple time. So हम एक बार consider करेंगे L. After this, O is multiple time. So O I will consider one time. Okay. After this, W is there. W है हमारे पास. So W, how many times W is there? So W is there. Let me take like this. W there. W भी एक बार है, तो W ले. Now R is one time and T is one. So what you need to do? Unique vowels. अब कितने unique vowels बचे हैं? O is one unique vowel. E is one unique vowel. That is your result. ये हमारा result. What is my result? Result will be something like O, and then we are having something like, ठीक है, ये प्रॉब्लम. अब बताओ ये होमवर्क में करोगे या मैं करवाऊं? सी, दिस इज माय स्ट्रिंग व्हिच इज गिवन. एक स्ट्रिंग आपको दी गई है, अगर उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो आप उसको एक बार सिर्फ कंसीडर करोगे. देखो यहाँ पे एन मल्टीपल टाइम्स है, मैंने एक बार कंसीडर किया. ओ मल्टीपल टाइम्स है, एक बार कंसीडर. और रिटर्न क्या करना है आपको? जब आप एन रिपीटिंग कैरेक्टर हटा दो, उसके बाद आपको ये रिटर्न करना है कि कितने यूनिक वोवेल है इसके अंदर. How many unique vowels are there in this? हाँ, होमवर्क और यू विल ट्राई. एवरीबडी होमवर्क करना है या फिर ट्राई करना है? एवरीबडी होमवर्क, एवरीबडी इज रेडी फॉर होमवर्क. ठीक है, ट्राई करना. लेट मी टेल यू समथिंग हाउ यू कैन डू दिस. हाउ यू कैन डू दिस, कैसे करते हैं? हेयर यू कैन यूज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन आपको यूज करना पड़ेगा. एंड देन व्हाट यू नीड टू यूज? यू नीड टू यूज सेट एज वेल. व्हाई सेट? कोई बता सकता है सेट क्यों यूज कर रहे हैं हम? We are using set because if you will see, I am removing duplicates here or not. क्या मैं duplicate यहाँ पे remove कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? L अगर दो बार है तो मैं एक बार consider कर रहा हूँ. This means that we are removing duplicate. Okay, so set का use होगा और intersection का use. These two things you need to use in this problem. ठीक है? These two things you need to use in this. ठीक है? तो इसको एक बार ट्राई करना, नहीं होता है मैं बताता हूँ. ठीक है? Intersection you need to use and set you need to use. These two things you need to. अच्छा, कितने लोग चाह रहे हो मैं अभी करूं? जैसे अन्वेष चाह रहा है अभी करो. एनीबडी एल्स हु वांट्स? कोई और चाह रहा है कि मैं करूं इसको अभी? ओके, रंजीत वांट्स. ओके, एनीबडी एल्स? होमवर्क कर लो. ओके, विश्वजीत भी चाह रहा है. दुर्गा. ओके, लेट मी रन, लेट मी शो हाउ इट इज वर्क. सी हियर, फर्स्ट फोकस ऑन दिस स्ट्रिंग. If any string is having n repeating characters, अगर n repeating characters हैं तो हमको क्या करना है? सिर्फ एक बार कंसीडर करना. दैट मीन्स जितने भी डुप्लीकेट है इसमें से उसको हटाना है सबसे पहला काम. तो उससे पहला भी काम एक है, वो है कि स्ट्रिंग हमारी अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकती है. तो मैं क्या करूंगा? स्ट्रिंग को पहले तो इसको कन्वर्ट करो तुम आइदर लोअर केस में और अपर केस. ठीक है, किसी भी केस में कर सकते हो. इट्स अप. So now I am going to convert it in lower case. ठीक है, मैंने इसको कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट. Why I have done this? Because
from user side, user either can give uppercase or user can give lowercase. Both things are accepted. But when we are talking about Python program, Python programming is case sensitive. Uppercase and lowercase both are different in Python program. Uppercase और lowercase अलग अलग रहता है Python programming के, ठीक है। तो इस वजह से जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में अपर केस और लोअर केस अलग अलग रहता है। तो यूजर कुछ भी देगा मैंने उसको लोअर में कन्वर्ट किया, आप कुछ भी दो मैं उसको लोअर में करूंगा और मैं जो भी कोड लिखूंगा वो लोअर के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ठीक। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट माय स्ट्रिंग 1, you will see complete string is there in lower case. अब मुझे क्या करना है, आई वांट ऑल द कैरेक्टर्स, मुझे सारे कैरेक्टर्स यूनिक चाहिए। I want all the characters in unique form. That means without repetition. अब without repetition कैसे करते हैं? Simply just convert this in the form of set. अब set में directly इसको convert. Now when I am converting in the form of set, आप देखोगे सारे duplicates remove होंगे कि नहीं हो? All the duplicate is automatically removed. Set बहुत powerful है। जहां भी duplicate remove का question आएगा ना, आप set apply करो। Wherever this type of question is there and repeating characters, you can apply set. Set is very powerful because by default it will remove all the duplicates for you. So duplicate तो आपके remove, your duplicate has been removed. अब इसके बाद क्या करना है? What is that? Unique vowels. If you will see the question, different unique vowels हमको find करने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे vowels हैं वो fixed हैं कि नहीं है? जितने भी वोवेल्स हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं कि नहीं है, कोई बताएगा? क्या वोवेल्स चेंज होते हैं कि वोवेल्स फिक्स्ड है? एनीबॉडी? वोवेल्स आर फिक्स्ड, दैट इज व्हाट? ए ई आई यू, these are the vowels which are fixed. So what I will do is I will create one more set. मैं एक और सेट बना दूं, set 2 is equal to a comma e comma I comma o comma e. तो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्ट्रिंग 1 का कन्वर्ट कर दो सेट। अब कोई बता सकता है कि हमको अब क्या करना है? अब व्हाट आई वांट इज आई वांट यूनिक वोवेल्स। यूनिक वोवेल्स मींस फ्रॉम दिस सेट व्हाटएवर यूनिक वोवेल्स आर देयर आई नीड टू एक्सट्रैक्ट। अब ये कैसे कर, कोई बता सकता है? थिंक, सपोज दैट हियर वी आर हैविंग दिस इज माय सेट and what is my objective? From this set I want to extract only vowels, whatever vowels are there I want to extract them. तो आपके पास दो सेट हैं और आपको वोवेल्स एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? डायरेक्टली इंटरसेक्शन यू कैन अप्लाई, डायरेक्टली इंटरसेक्शन यू कैन अप्लाई। हाउ यू विल डू इट? प्रिंट set1 डॉट इंटरसेक्शन सेट सी। हो गया कि नहीं हो गया प्रॉब्लम? दीज आर द यूनिक वोवेल्स व्हिच आर देयर इन योर क्वेश्चन, these are the unique vowels which are there in your question. बस इतना। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्या किया मैंने, सेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट तो चाहिए नहीं था। जहां भी आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए आप सेट में कन्वर्ट, कहीं भी आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए आप सेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक। ठीक है गाइस, आप लोगों का 5 मिनट का ब्रेक है, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी वेरी, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक इज देयर, एट 9:31 आई विल स्टार्ट। फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, काउंट यूनिक आई विल डिस्कस। रंजीत रुकना, मैं बताऊंगा कैसे काउंट करते हैं यूनिक, अभी ब्रेक के बाद ही मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। सो गाइस ब्रेक है, जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकता है, और दोज हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट दे कैन टेक वाटर एंड व्हाटएवर दे वांट। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी। चलो Q&A तब तक देखो। Someone has asked, is there any difference between output पे कोई difference नहीं आएगा विजय, there is no any difference in the output of update and union. The only difference is when we are using update, okay, when we are using update in your original set, second set elements will be added, but when we are talking about union,
two sets will be combined, and after combining a new set will be created. There your combination of this set will be there, एक नया set बनेगा वहां पे. But when we are using update, in the original set itself your elements will be added. That is the only thing. आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम होंगे, दोनों में कंबाइन होता है. ठीक है. Any other question, doubt, please let me know. हाँ सही है, मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा दैट थिंग. What is LEN? What is all those things? That I will discuss. Just one. Harry is trying to find the midpoint. अच्छा. अच्छा, ये तो वाला क्वेश्चन है ना. चलो, 3 मिनट है, चलो उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर. ठीक है. हैरी वाला क्वेश्चन डाउट आ रहा है, तो लेट्स सॉल्व. कहाँ पे है क्वेश्चन हैरी वाला? एनीबडी? Where we are having this Harry problem? In which module? Before BMI. Okay. Okay, yeah, this. Okay. So 4 inputs are there. Okay, then 3. ठीक है. सो हेयर आंसर आपका उसमें आ रहा है इंटीजर में. ओके. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, आपको टाइप कास्टिंग यूज करनी. लेट मी शो. सो फर्स्ट थिंग इज टेक इनपुट. सो इंट इनपुट. Here also int input. Here also int input. Here also int input. ठीक है. Now your result will be x1 y1 addition. So print x1 plus y1 divide by. ठीक है. Divide by सेम एज इट इज x2 y2 डिवाइड बाई 2. बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, मैं समझ गया हूँ. बिकॉज फ्लोट विल गिव यू रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट. सो आपका यहाँ पे रिजल्ट 3.0 आएगा, बट टेस्ट केस में 3 दिया हुआ है. ये प्रॉब्लम है यहाँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी हैंडल दैट. सो आंसर 1 इज इक्वल टू this is your first one, and after this system. Then we are having answer 2 is equal to x2 plus y2 divide by. अब इस यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा गाइस, वो आएगा 3.0. ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसी केस को ले लूं, तो आंसर आएगा 3.0, which is wrong because according to the test case, if you will see, your result is 3, which is an integer. Which is an integer. So अब ये कैसे करें? So what you can do is, when you are printing your answer,
जस्ट कन्वर्ट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंट। आप अपने आंसर को इंट में कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंट लाइक दिस। नाउ इट विल वर्क। सो लेट मी कॉपी द इनपुट्स। इनपुट्स की बजाय रन टेस्ट करके देख लो। रन टाइम एरर, इट इज फेलिंग। int of answer by int of answer। सही है। See, answer is not। Oh, answer one, answer। Now see, bracket is missing। Fine। 2 and 4। 2 and 4 कैसे आ रहा है? 2 and 4, 4 डिवाइड बाई, ये तो रॉन्ग है ना। 4 plus 2 x1 y1, ये तो गलत है। इज इट? x1 x2 को एडिशन कर रहे हैं, बट लाइन की इक्वेशन तो ये नहीं होती है। लाइन टू द इक्वेशन x1 plus y1 होती है। चलो, जो क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू विल डू, देन x1 plus x2 y1 plus y2, बट इक्वेशन लाइन की ये नहीं होती है गाइस। बट इन क्वेश्चन दे हैव गिवन, वी कैन डू दैट। 3.3, लेट्स चेक इट। हाँ, पास हो गया। दैट इज द थिंग गाइस। सो यहाँ पे गलती क्या हो रही थी, x1 plus y1 का एडिशन किया गया है। ओके, सॉरी, x1 plus x2 का एडिशन किया गया है। बट क्या हो रहा है, जब हम लोग ये फ्लोट, जब हम लोग डिवीजन यूज करते हैं ना, वी आर यूजिंग डिवीजन हियर। सो व्हेन वी आर यूजिंग डिवीजन, देन बाय डिफॉल्ट योर रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। आपका रिजल्ट फ्लोट में आ रहा है, बट यहाँ पे आप देखो रिजल्ट आपका इंटीजर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जब जो मेरा रिजल्ट आ गया उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बस वही किया है, बस रन कर। दैट इज क्लियर हुआ विश्वजीत? विश्वजीत, इज योर क्वेश्चन इज क्लियर? क्या हुआ है? x1 plus x2 कॉमा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, इन डिफरेंट लाइन यू नीड टू डू इट। सेम लाइन में ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक दिस, इन फर्स्ट लाइन यू कैन राइट लाइक दिस, एंड इन सेकंड लाइन यू कैन राइट लाइक दिस, देन यू कैन डू। आप सेम लाइन में ऐसे नहीं कर सकते। ओके, that will be in the form of tuple। So this is a code you guys can refer, those who are having issue, you guys can refer this। Okay, fine। So everybody is ready, shall we start? बढ़े आगे? सब रेडी हो? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट। ये चीजें जितनी भी मैंने डिस्कस की, ये सारी सेट की थी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट आई एम गोइंग टू राइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नोट। व्हाट इज दैट नोट? दैट इज दैट नोट, रिमेंबर दिस। वी नो data structure, data structure। In your data structure, we are having list, we are having tuple, we are having tuple, we are having set, we are having dictionary, and at certain point we are also having string। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज आती है। ठीक है, देयर इज वन मोर नेम दैट वी आर यूजिंग। व्हाट इज दैट नेम? ये नेम बोला जाता है आइट्रेबल्स। आइट्रेबल्स, ओके। व्हाट इज योर आइट्रेबल्स? These data types are your iterables, the data types which are storing more than one values at a time, these are also known as iterables। ठीक है, इनको एक और चीज बोली जाती है, that is your container। कंटेनर, ये भी आपका सेम ही होता। So all these things are known as, either you can call it as iterable or you can call it as data structure, but programmatically we are calling it as iterable। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दिखा देता हूं। सी, फॉर आई इन 10, मैं एक प्रूफ दिखाता हूं। व्हाई iterable is very common term that I am showing। See, what here you are able to see iterable। What is the meaning of this? This 10 is there, 10 is not a part of iterable, इसलिए ये बता रहा है कि int object is not iterable, because iterable means only these are known as iterables, these are known as iterables। ये आपके iterables हैं सर। okay,
So please remember this thing. Iterable is a common term that we are using in our programming. So sometimes you will get this kind of error, iterables. So directly it means that you are not using these data types. That's why you are getting this error. Okay. So this iterable is also this one. Yeah, iterable भी यही चीज होती. This is the thing. So पहला नोट तो ये. This is your first note. Okay. So data structure जो data types है हमारे उनको multiple चीजों से denote किया जाता है. Okay. So let me write here. Data types or data structure of Python is also known as ये चीज. ये आपके डेटा स्ट्रक्चर भी कहलाती है, ये आपकी डेटा स्ट्रक्चर भी कहलाती है, आइटरेबल्स भी कहलाती है, कंटेनर भी कहलाती है. दिस इज योर फर्स्ट. अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट इज योर mutable and immutable object. Mutable and immutable objects are also known as इसको और भी बोला जाता है. What is that? Hashable objects. और एक और टर्म यूज होता है that is known as unhashable objects. So basically, what is the meaning of hashable objects and what is the meaning of unhashable objects? See, in technical terms, the name is different. वर्क दोनों का सेम होता है, चीजें सेम है, नाम अलग. Okay. So what is hashable and what is unhashable? So basically, unhashable means I'm confused in this. Give me a moment, guys. एक चीज देना, कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर कर लूं. कोई भी कंफ्यूजन होती है, at that moment it is better to solve that. So मैं भी चेक करके बता रहा हूँ कि अनहैशेबल कौन से होते हैं, हैशेबल कौन से. हाँ, unhashable is your mutable. Unhashable means mutable data types or mutable objects are your unhashable objects. First point, please remember this. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. बहुत बार आपको हैशेबल और नॉट सुनने को मिलेगा. नेक्स्ट इज योर immutable objects are your hashable objects. Immutable objects are your hashable objects. तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, बट इनका दिमाग में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एक कॉमन चीज है. अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया अनहैशेबल क्या होता है, आप सोचोगे तो नया टर्म आ गया. इट इज अ वेरी बिग न्यू टर्म, बट इट इज नॉट अ बिग न्यू टर्म. इट इज अ वेरी सिंपल टर्म, दैट इज म्यूटेबल. Okay, immutable, you know what is mutable, what is immutable. That thing is, so only term is different. Here term is different, meaning is same. Okay, meaning is same. Now in these 2 points, if any doubt is there, please let me. Everybody is comfortable with these terms? सब कंफर्टेबल हो? फिर मैं एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट देने वाला हूँ. Now I am going to give a very big twist. This is just a term which is there. What is the meaning of term? Data structure. Data structure is also known as iterables. Iterables are also known as containers. Same as it is, mutables are also known as unhashable objects. Hashable objects means immutable objects. Just term is change, meaning is same. सिर्फ term में अंतर है, meaning same. ठीक है, term में अंतर है. रंजीत, the meaning is same, mutable and immutable. क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ. क्लियर एवरीबॉडी? बड़े. Now that important point is, now I am going to change the definition here. मैं यहाँ पे definition change कर रहा हूँ. Set is a collection, or let me change there as set is a collection of hashable objects. Hashable objects. अब इसका मतलब क्या है, दिमाग में लाना. क्या, क्यों मैंने ये चीज लिखी? Try to understand. If you are creating a set, पहले तो hashable objects कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए. So what are your hashable objects? See, hashable means immutable objects. What are your immutable objects? Tuples are your immutable objects. Your int is your immutable object. Float is your immutable object. Boolean is your immutable object. After this,
स्ट्रिंग इज योर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इट्स, ठीक है। म्यूटेबल कौन कौन से हैं? लिस्ट इज योर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, सेट इज योर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी इज योर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ये आपकी, ठीक। अब मैंने लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ हैशेबल ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनहैशेबल? क्या अनहैशेबल स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस एट लास्ट। तभी मैंने, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग बता देता, आधे से ज्यादा परेशान हुई। ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, अनहैशेबल मींस म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। आप सेट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते। आई विल शो यू विद प्रूफ, लेट मी शो। सी, मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज माय सेट, set1 is equal to, I am going to store list 1 2 3, and then I am going to take something like 10 20, then height, then by. Okay, now if you will see, this is my list. क्या मैं लिस्ट को स्टोर कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते, बिकॉज सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनहैशेबल ऑब्जेक्ट्स। सी, सॉरी, हैशेबल ऑब्जेक्ट्स, अनहैशेबल ऑब्जेक्ट लिस्ट, क्योंकि लिस्ट आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को सेट के अंदर नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन हैशेबल ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से immutable objects और immutable data types. Only immutable you can use. Let me take tuple as tuple का एग्जांपल देखिए। Tell me, will tuple will accept this? अगर मैं यहाँ पे tuple लेता हूँ, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? If I am taking like this, will it accept? क्या एक्सेप्ट होगा यहाँ पे? Anybody? Yes, it will accept. Why it will accept? Because tuple is immutable, और immutable को आप यूज कर सकते हो। देखो, तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है, कलेक्शन ऑफ हैशेबल ऑब्जेक्ट्स। इन इंटरव्यू बहुत बार ये चीज पूछी है, और हम लोग क्या बताते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। Okay, it is hashable objects. You cannot store mutable objects in set. Mutable objects are set में नहीं रख सकते. Please remember this. Is it clear? कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि सेट क्या है, कलेक्शन तो है, सेट के अंदर मल्टीपल चीजें तो आप स्टोर कर सकते हो, बट किस टाइप की चीजें आप स्टोर कर सकते हो? सिर्फ म्यूटेबल, इम्यूटेबल टाइप की चीजें। और इम्यूटेबल टाइप कौन कौन से हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ इनको आप स्टोर कर सकते हो, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर नहीं कर सकते सेट के अंदर। ये मतलब है, समझ आया या कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ, सेट के अंदर सेट को नहीं रख सकते, मैंने बताया अंदर नहीं रख सकते हो आप, समझो यहाँ पे। सी, दिस इज योर सेट, बट अगर मैं सेट के अंदर एक और सेट एलिमेंट रखना चाहूं, वो आप नहीं रख सकते, बिकॉज सेट इज म्यूटेबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस वन एज सेट लाइक दिस, तो आप देखोगे ये तो हमारा सेट है तो उसके अंदर सेट की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और सेट क्या कहता है कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आपके सेट के अंदर स्टोर नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पे आपने सेट को स्टोर कर दिया, सेट तो है, सेट तो म्यूटेबल है, आप उसको नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगी। तो सेट के अंदर आप नहीं कर सकते, सेट के अंदर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर नहीं कर सकते। सेट तो म्यूटेबल होता है, दैट इज फाइन, बट सेट के अंदर म्यूटेबल नहीं स्टोर कर सकते। यार दिमाग, करेक्ट। समझ आया या बाउंसर गया? इसको समझ में आया? आपके बाउंसर नहीं है, आपको देखो, बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग हो वो कर पाएगा ये। मैंने पहले भी बताया इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है। सेम चीज यहाँ पे यूज हो रही है, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, और वही चीज यहाँ पे आ रही है। अभी यहाँ पे आगे और आएगी। इम्यूटेबल म्यूटेबल ऐसी चीज है जो हर बार आने वाली। See here what I mentioned. Set is a collection of hashable objects. Hashable का मतलब होता है immutable. Immutable का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये मतलब होता है, ठीक है। तो सेट अगर आप बना रहे हैं, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आप स्टोर करो, जो भी एलिमेंट्स आप सेट के अंदर स्टोर करोगे ना, वो एलिमेंट्स आपके इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए। तो अगर आप म्यूटेबल टाइप के एलिमेंट सेट के अंदर स्टोर करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने लिया, ये तो हमारा सेट है, तो सेट के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, बट मैंने सेट के अंदर एक और सेट ले लिया है जो कि है 10। सेट के अंदर एक और सेट लिया है जो कि है 10, बट ये तो वैलिड नहीं है।
क्योंकि सेट जो है वो म्यूटेबल होता है, तो म्यूटेबल एलिमेंट आप नहीं ले सकते हो सेट के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन एरर। बट जब मैंने टपल का एग्जांपल लिया, हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ टपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टपल, दिस टपल इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, बट टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो इम्यूटेबल को आप सेट के अंदर एज अ एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो एज अ एलिमेंट सेट के अंदर आप इम्यूटेबल तो ऐड कर सकते हो, बट म्यूटेबल ऐड नहीं कर सकते एज एन एलिमेंट। बस इतना है यहाँ। अब समझ आया श्वेता, एडी, दुर्गे? जो एलिमेंट्स आप ऐड करोगे ना सेट में, वो एलिमेंट्स आपकी इम्यूटेबल होने चाहिए, बस इतना है। जो सेट के अंदर आप एलिमेंट्स ऐड करोगे वो इम्यूटेबल होने चाहिए, वो म्यूटेबल नहीं होने चाहिए, एकदम म्यूटेबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, दैट इज इट। बढ़े आगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पूछा जा सकता है गाइस, हैशेबल और हैशेबल क्या होता है? सेम चीज, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, कोई अंतर नहीं, सब कुछ सेम है, नाम में अंतर है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। इसकी गाइस प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं चाहे जितना पढ़ा लूं, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब चीजें जाएंगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज आज पढ़ रहे हो कल भूल जाओगे। ये ऐसी चीजें हैं, यू नीड टू डू रेगुलर प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली ऑप्शन टू प्रिपेयर दिस थिंग्स। Now, after this, a very important thing I am going to discuss, built-in methods, built-in methods and functions in Python. अब ये पॉइंट आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रखना, क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, in Python program, in Python programming, there are there are few there are few methods slash functions that we can use directly directly with iterables means data structure, iterables means container। ठीक है, बहुत बार iterables टर्म आएगा, iterable means कंटेनर्स। तो पाइथन के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो हम डायरेक्टली iterables के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड such type of methods are known as inbuilt method और built-in method और built-in, दोनों सेम। अब ये कौन कौन से मेथड होते हैं? व्हाट आर दीज मेथड्स? रिमेंबर दिस, एग्जांपल्स। मैं मेथड सारे बता दूंगा, फिर एक एग्जांपल लेके सारे एक्सप्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट मेथड इज योर सम मेथड। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक आइट्रेबल्स डालोगे। आइट्रेबल्स का मतलब होता है योर दिस वन डेटा स्ट्रक्चर, इट कैन बी एनी डेटा स्ट्रक्चर, इट कैन बी एनी डेटा स्ट्रक्चर यू कैन पास। व्हाट दिस विल डू, ये क्या करे? this method will return sum of all elements of the iterables। जो भी आपका आइट्रेबल है उसके सारे एलिमेंट्स का सम देगा ये। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज योर मैक्स फंक्शन। व्हाट दिस फंक्शन विल डू, this method will return the maximum element of the iterables। maximum elements iterables का देखें, same as it is we are having min of iterables। what is min of iterables? So basically this method will return the minimum element of the iterables। एक मेथड और होता है sorted of iterables। this method will return a list in sorted order। आपको एक लिस्ट मिलेगी sorted order की फॉर्म। So basically these are the methods which are commonly used with iterables। एक और method है, that method is your len method। what this method will do, this method will return the
the number of elements, present in the iterable. अब ये बताओ किस आइटरेबल का एग्जांपल आपको चाहिए ये सारे एक्सप्लेन करने. Which iterable example you want so that I can explain this? Which iterable example you want? किसका ले? स्ट्रिंग पे सम वर्क नहीं करेगा. ये सम मैक्स और मिन सिर्फ इंटीजर पे वर्क करते हैं. आपके यहाँ फेल हो जाएंगे सम वाले. ठीक है, स्ट्रिंग पे ये फेल हो जाएंगे. सम मैक्स मिन जो है ना ये फेल हो जाएगा स्ट्रिंग के केस. Okay, sum, max and min will, you can only calculate these three things with respect to string, like with respect to other data types other than string. String पे work नहीं करता. Let's take tuple. चलो set ले लेते. Set ले रहा है, ठीक है. Let me take set. Okay. Suppose that I am creating one set. Set 1 is equal to 1, 2, 3. कुछ set ले रहा हूँ मैं. What is my objective? I want to calculate the sum of all elements. Sum of all elements of this set. मुझे सम चाहिए सारे एलिमेंट्स का सेट की. तो मैं कैसे करूंगा? कॉल सम फंक्शन. सम क्या है? ये फंक्शन. इसके अंदर आप अपना आइटरेबल दोगे. आइटरेबल क्या है? आइटरेबल मींस डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट इज योर डेटा स्ट्रक्चर? दैट इज सेट. दैट्स. So what this will do? This will give you sum of all the elements. जितने भी एलिमेंट्स का सम होगा आपको मिल जाए. What is your sum? 115. The sum of all the elements of this iterable is 100. Same as it is, if you want to next method, let me use that method as a max method. So the maximum element of this set, how we will get that maximum element? We will simply write max. तो ये क्या करेगा? इस सेट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाए. लेट मी रन सी. मैक्सिमम एलिमेंट इज 54. यस, 54 इज द मैक्सिमम एलिमेंट. सेम एज इट इज आपको मिनिमम चाहिए. आप मिनिमम ले लो, मिनिमम कॉल कर लो. Minimum element is min. Okay, see, you will get minimum element which is same as it is. If I want to get sorted list, sorted list is, ठीक है, sorted list is. अब मैं क्या करूंगा? Sorted function को कॉल करूंगा and in that I will pass set1. That's it. See, bracket is missing there. Now see, वन लिस्ट इज जनरेटेड और वो लिस्ट क्या करेगी? आपके आइटरेबल के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रही है. आपके आइटरेबल्स के एलिमेंट को सॉर्ट कर. ठीक है, दैट इज इट. नाउ सेम एज इट इज वी आर हैविंग len मेथड. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, यू कैन यूज len मेथड. set1. सी, length is 8. 8 elements are present in this. So these are general methods which we are using in real time. बहुत यूज किए जाते हैं ये. Okay, these method and these method will work with any of the data types. For example, you are having list, you can use it. You are having tuple, you can use it. You are having set, you can use it. Dictionary, you can use it. Anywhere you can use this. कहीं भी आप इसको use कर सकते. It will work. If it is a tuple also, let me show you a tuple as well. मैं सारे एग्जांपल दिखा देता हूँ. मैं टपल का भी दिखाता हूँ. फिर ये टपल का तो हाँ, टपल का मैं पहले दिखा देता हूँ. सी, same thing if I am considering a tuple, you will get same results. ठीक है, सेम चीज. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कोई बता सकता है? यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव हो गए, इस वजह से सम 115 आया है. बट हियर योर डुप्लीकेट्स आर देयर, दैट्स व्हाई सम इज 176. सेम एज इट इज if you are having something like list, here also you will get. See, अब किसी के साथ अप्लाई कर दो वर्क. So these are the methods which are generally used. हम commonly use कर लेते हैं इन method in real time. Now ask your doubts in this. In this, if any question is there, please. In this, if any doubt is there, please.
ठीक है। नहीं, एक और चीज यहाँ पे है गाइस, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सॉर्ट, सी सॉर्टेड ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो रहता है दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर, बट मुझे असेंडिंग नहीं चाहिए, आई वांट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हाउ वी विल डू इट? Simply you will pass iterable, and along with iterable there is one more term you need to pass, that is your reverse is equal to. तो ये क्या करेगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा. योर रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट मी शो. मैं इसी को ले रहा हूं, और आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू राइट हियर सॉर्टेड कॉमा कॉमा रिवर्स इज इक्वल टू. तो क्या होगा इस केस में, अब ये एरे जो है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा. दैट मींस यू आर गेटिंग योर रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इफ यू वांट योर आंसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन डू लाइक दिस. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते. क्लियर हो गया सबको? ये कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? सब कुछ क्लियर है गाइस? बढ़े आगे. ठीक. After this, we are having one method, that is your eval method. See, it is also journal method. ये journal method है. Eval method is the journal method which is there. What is that eval method? Let me tell you. क्या करता है? What this will do? Basically, this method will take a string as an input. First point is ये आपका string as an input लेता है. पहले तो इतना आपको ध्यान. फिर ये क्या करता है? eval will first check whether the string data is a valid expression or not. And if the expression is valid, then eval function will evaluate that expression and return the result. Here, let me write the syntax, then I will explain you more about this. What is this? Eval of string. You can directly pass a string here. That is fine. Now see, suppose that I am writing print eval. अब इसके अंदर मैंने दिया एक expression like 1 plus 2. This expression I have. What eval will do? Eval will first evaluate this expression and check it is a valid expression or not. तो इसको evaluate करेगा eval. तो इसको evaluate करूं, 1 plus 2 क्या रिजल्ट आएगा? 3. तो अब पाइथन अब eval क्या करेगा? 3 हमारा कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है. इंटीजर इज अ वैलिड डेटा टाइप. Yes, integer is a valid data type. So that will be your result. तो जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो इसके अंदर, ये पहले उसको इवेल्युएट करता है. After evaluating it, it will check whether it is a valid expression or not. If your expression is valid, it will evaluate that and you will get the. That is the working of eval function. But there is one more use of eval function. What is that? Take input using eval function. So basically, if you want to take input of list, tuple, set, dictionary, all those things you can take. You can take either with the help of for loops or list combination or a map function. All those things are there. But one more way is there, that is known as eval method. Now, how this eval is working? Try to understand. Suppose that, let me show you here first what it is doing. Suppose that I am passing eval of within a string. I am giving 1, 2, 3. मैंने कुछ ऐसे दी. I have given something like this. Okay, 1, 2, 3 like this. अब कोई बताएगा ये जो string के अंदर है क्या ये valid expression है? According to Python syntax, this 1, 2, 3
विद इन ब्रैकेट इज इट अ वैलिड एक्सप्रेशन इन पाइथन? ये कोई डेटा टाइप आपको दिख रहा है? इज इट अ वैलिड एक्सप्रेशन और नॉट? यस इट इज वैलिड बिकॉज इट इज अ लिस्ट डेटा टाइप। ये आपका लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। तो इवैल क्या करेगा? इवैल क्या करेगा? इसको इवेल्युएट कर देगा, ठीक है। इसको इवेल्युएट कैसे करेगा? इसको इवेल्युएट करके आपको रिजल्ट देगा। तो जब ये इवेल्युएट करेगा, तो ये जब इवेल्युएट करेगा तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं, लिस्ट ही आना है, क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट ही आना है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में आओ, 1 + 2 that is 3, your result is 3. What eval is doing? Eval is just converting that 3 in integer. ये तो कर रहा है। सेम एज इट इज हियर, लिस्ट इज व्हाट? लिस्ट इज योर डेटा टाइप, लिस्ट इज डेटा टाइप। एंड व्हाट eval will do? Eval convert because it is a valid expression. अगर ये वैलिड एक्सप्रेशन है तो ये एक्चुअल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। सो व्हाट इज द एक्चुअल डेटा टाइप फॉर दिस? इट इज अ लिस्ट। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज अ लिस्ट। जो आंसर हमारा आएगा दैट इज योर लिस्ट। So if you want to take input in the form of list set tuple dictionary, आप eval function से बहुत आसानी से ले सकते हैं। Let me show how we can do. List one is equal to, you can write eval and you can pass input. अब यहाँ पे eval करेगा क्या समझ? See here, input function will take your result in the form of string. आपका रिजल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा eval, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपने eval यूज किया। इवैल क्या करेगा? इवैल जो स्ट्रिंग आपकी आई है, इट विल इवैल्यूएट वेदर इट इज वैलिड हो। अगर ये वैलिड होता है, इफ इट इज अ वैलिड एक्सप्रेशन, देन व्हाट इवैल विल डू? इवैल विल कन्वर्ट इट इनटू एक्चुअल एक्सप्रेशन और एक्चुअल रिजल्ट। बस। तो ये आप यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग लिस्ट एज एन इनपुट, टपल है, कोई भी चीज आप इनपुट ले सकते हो, किसी भी चीज का आप इनपुट ले सकते हो। इफ यू वांट टू टेक सेट एज एन इनपुट, यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेट मी शो। See, I am passing 1, 2, 3, 4, 5. This is a list. Now, see here, class list. Same as it is, I am taking something like tuple. मैं tuple ले रहा हूँ। Same input में आपका कोई भी input आप ले सकते हो। See, I am passing tuple 1, 2, 3, 4, 5. See, आ गया and bracket is missing. हाँ, because it is not a valid expression. मैंने बताया ना, valid expression होना चाहिए। Valid expression was, see here, I have used parentheses and here I am using curly braces, which is invalid. Okay, so valid expression must be there. If it is a valid expression according to Python, then you can say, you can do it. Otherwise, you can see. Yes, sir. Same as it is. अगर आपको set चाहिए, आप set ले सकते हो. See, it is a set. कोई भी input आप ले सकते हो. और event कर क्या रहा है? Very simple. Whatever you have given in this string, it will first check whether it is valid or not. If it is valid, it will evaluate that, and after evaluating that, whatever result you are getting, that result it will see. So it is a valid expression. Yes, it is a valid expression because it is a list. Python के हिसाब से valid है कि नहीं है? ये valid है because it is a list. Okay. And what eval is doing? Eval is just evaluating this. तो list को अगर आप evaluate करोगे तो list तो आएगी आपकी. So that list is your answer. Ask you doubts. This is your eval function that you can use for taking input. ये eval function आप use कर सकते हो। किसी को doubt था? I think लवी को doubt था। Okay, so this is a way to take list as an input. हाँ, what does invalid means? Invalid means, for example, I am taking something like 1, 2, 3, 4. Is it valid, guys? अगर मैं ये print कर रहा हूँ, क्या ये valid data type है? Is it valid, guys? सोचो। Is it valid? This one is valid. क्या ये valid है? तो बताएगा। Is it valid or not? It is invalid. Why it is invalid? Because of this bracket. तो ये पाइथन के स्टैंडर्ड के हिसाब से वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये एरर दे देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके इवेल्युएट में जो भी आप पास करोगे ना, वो एक वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड होगा तभी पाइथन इवेल्युएट करेगा, अदरवाइज एरर करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट he is asking, someone has asked me, who is asked? Pranjal. That is the meaning of invalid. कि आपका एक्सप्रेशन इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ये आपका इनवैलिड हो गया है। Because here you will see I have used parenthesis and here I am using curly braces. So this is invalid data type. No any data type is there like this.
So it is invalid. You cannot use like this. Okay, that is a meaning. प्रांजल क्लियर हुआ क्या? प्रांजल क्लियर हुआ? अदर देन एग्जांपल, चलो और एग्जांपल ले लो. हाँ, इज इट वैलिड गाइस? इज इट वैलिड? क्या ये वैलिड है? स्ट्रिंग 10 एंड आई एम ट्राइंग टू ऐड दैट विद इंटीजर 10. स्ट्रिंग का 10 है, उसमें हम इंटीजर का 10 ऐड कर. कैन आई डू दिस? इज इट अ वैलिड एक्सप्रेशन? No, because it is one is your integer type and second is your string type. How you can perform integer and string addition? So that is your invalid. See, error is going to come. Okay, that is the meaning. I hope now it is clear, Pranjal. See, ठीक है. हाँ, कुछ डाउट आ रहे थे. Let me take that. Print eval 1 2 3 of list. You uses comma so guys. मैंने वही चीज बताई. आप डेफिनेशन पे फोकस करो. फर्स्ट आपका आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रिंग में रहे, तो मैंने स्ट्रिंग में दिया, कोटेशन के अंदर ही रहेगा. इवैल हर चीज कोटेशन के अंदर ही लेता है. फिर क्या करेगा, जो भी कोटेशन के अंदर आप देते हो वो उसको इवेल्युएट करता है. जो भी चीज आप दोगे उसको वो इवेल्युएट. तो ये इवेल्युएट करने के बाद देखिएगा क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है कि नहीं. अगर ये वैलिड एक्सप्रेशन होगा आपको रिजल्ट दे देगा, अगर इनवैलिड होगा तो आपको एरर देगा. बस यही है. ठीक है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही इवैल वर्क करता है. Eval will only take one argument and that is your string form. You cannot give any other argument with eval. Eval will always take one input which is nothing but your string form. Sir, if we use eval input, it will, yes, it will auto add because after evaluation, for example, मैं बता देता हूँ. मैं एक example दे रहा हूँ, बताना. I am writing 1 plus 10.5. What is the result, guys? What is the result? क्या result आएगा? What is the result for this? 1 plus 2.5, 3.5. अब मेरा क्वेश्चन है, मैं एक तो मेरा इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था. हमारा फ्लोट ही आंसर कैसे आ? ये टाइप कास्टिंग कैसे हुई? हाउ दिस टाइप कास्टिंग हैज बीन डन? Because Python is evaluating it for you. Same thing is happening here. After evaluating, whatever result is coming, it is float or an integer, that is fine. But that result you are getting. So ये evaluate कर रहा है और आपको result दे रहा है. Result जो भी आए, it can be any result. That result you are getting. Next doubt. Other than that, I think everything's. हाँ गाइस, आप पूछो. ये सिर्फ स्ट्रिंग लेता है इनपुट. स्ट्रिंग के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हो इवैल के. Only string you can give and whatever you have given in this eval, it will evaluate that and it will give you result. वो उसको evaluate करेगा, आपको result. बस इतना है इसका. और string हमेशा रहेगी eval के अंदर. Without string you cannot use eval. Eval you cannot use without a string. Is it clear? Guys, is it clear or not? डाउट है तो बताओ इसमें. सिंपल सी चीज है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो इसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट दिए दे रहा है. बस इतना कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. जो भी आप रिजल्ट दे रहे हो उसको ये सॉल्व कर रहा है और आपको रिजल्ट दे रहा है. सिर्फ 3 रिस्पॉन्सेस आएगा. इस बताओ एटलीस्ट नहीं क्लियर हुआ है तो बताओ. ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूं फिर से. ठीक है, एक और चीज है गाइस, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस करो. एवरीबॉडी प्लीज डू प्रैक्टिस बिकॉज दैट इज ओनली वे टू लर्न द थिंग्स. जो नहीं कर रहा है right now it is fine. See, we are at the beginning stage, but when we are moving with EDA, the things are going to be very very complex. बहुत complex. Okay, so right now we are at the beginning level. आप कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, आप हार्ड लेवल क्या, कितना भी हार्ड लेवल ले लो वो वर्क करेगा. मैं दिखा देता. ये सब आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो गाइस. देखो, लो भाई इतना हार्ड ले लिया. ठीक है, और लेना है. ठीक है, सी
वी आर गेटिंग वैल्यू एरर। हाँ, लिमिट आपकी एक्सीड हो गई, 43,000 लिमिट होनी चाहिए, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग। सो 43,000 आपका, या फिर एक वे होता है रिकर्जन का, हम लोग को एक चीज करनी पड़ेगी जिससे हम लोग लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट राइट नाउ यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दैट, दैट इज दिस वन, sys dot set string digits, so we can increase with this, but right now you need not to focus on this, but अगर आपको चाहिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। Here I am taking something like, now see, आ रहा है रिजल्ट कि नहीं आ रहा है? कुछ भी दे सकते हो, वर्क करेगा। Why I have set this limit? Because by default this is a string, and a string is having some certain limit, that is 4300. 4300 digit is acceptable. Okay, so after this, if you want, you need to remove that limit. So that limit I have changed with this number, and you are getting this. So आप कितना भी एक्सप्रेशन ले लो वो वर्क करेगा, ठीक है। लिस्ट इनसाइड स्ट्रिंग इज वैलिड, लिस्ट इनसाइड, वो तो एक कैरेक्टर की तरह वर्क करेगा ना प्रांजल। प्रांजल, list inside a string is valid. Yes, it will work as a, it will not work as a list in that case. It will work as a character. प्रैक्टिस नहीं कर रहा, दैट इज द इशू, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं। These all those things you can do as an experiment. See, here if you are taking something like this, it is your expression. If you are taking like this, and here I am taking something like A and B, this is nothing but an expression now. ये सब एक, ये क्या है? That is what, this is one character, second character, third character, fourth character, fifth character, sixth character, seventh character. So ये एक एक character wise चलता है. String is your collection of characters. So these are your characters. These are your characters. ये characters हैं आपके, फिर आपका characters consider होगा, list नहीं consider होगा. Okay, list inside valid. ठीक है, हाँ क्लियर हुआ ये? इवैल के अंदर आप कुछ भी दोगे वो उसको इवेल्युएट कर देगा, बट स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, वो इसको इवेल्युएट कर देगा और आपको रिजल्ट दे देगा। बस इतना आपको दिमाग में रखना, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या गाइस? बढ़े आगे? 3 to 4 responses, क्या हो गया? श्वेता, इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर इवैल फंक्शन। सो आपको इनपुट लेना है तो आप इवैल फंक्शन से डायरेक्टली ले सकते। That is what I have explained you about eval function. In real time, we are not using this eval. Real time में eval use नहीं किया जाता है, ठीक है? We are using for loop for taking list as an input. अगर आपको list as an input लेनी है या कोई भी input लेना है, we are using eval. Okay. But right now you are having some question, that's why I am explaining this eval. Now next we are going to discuss about dictionary data type. A very important data type which is there. Dictionary बहुत important data type. Now what is dictionary? Dictionary is a collection of की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। अब इसका मतलब समझ, सपोज दैट आई एम हैविंग वन वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल है नेम, वन वेरिएबल आई एम हैविंग कॉलेज। अब समझ लो, क्या नेम है हमारा एक वेरिएबल, क्या नेम की कुछ वैल्यू नहीं होगी? फॉर एग्जांपल, आई एम आस्किंग व्हाट्स योर नेम, आई एम आस्किंग व्हाट्स योर नेम। Now, what's your name means some value is there or not. With respect to this name, definitely some value will be there. Okay. So if your name is what? Name is one key. With respect to this key, we are having some value. So key value pair. Key value pair. Or you can also consider variable and value. Variable and value. That is also. So key value pair means no Pranjal must be is my screen is stuck, guys? क्या मेरी स्क्रीन स्टक हुई है? Check it, Pranjal, maybe network issue. Okay, network issues. ठीक है, कोई बात। Now try to understand. When we are talking about dictionary data, it is a collection of key value pair. That means when we are having some key, with respect to this key, some value will be there. For example, अगर name एक key है, तो with respect to me, what is my value for this name? It will be my name. अगर college है, college is my key. With respect to this key, what is my value? Alma mater is my value.
So what I want to store these key value pair, और इसको ये भी कह सकते हैं वेरिएबल एंड वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। मुझे वेरिएबल और वैल्यू दोनों स्टोर करने एक साथ। I want to store variable as well as value together. Then also you can use dictionary. Okay. So here this name is your key, and with respect to this name, some value will be there. That is your value. That is your value. Name is what? Name is just a variable name. Name is just a variable name. And with respect to this name, some value will be there. That value is nothing but your this value. This value. So what is key? Key is nothing but this one, and value is nothing but that is the thing. So one more thing, each key value pair is separated by colon. What is the meaning of? Suppose that this is my key and this is my value. Okay, so if you want to make it in dictionary, then key value pair will be separated with colon. तो आप ऐसे colon use करो. सो अभी तक जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेट, सेट इज स्टोरिंग वन एलिमेंट, बट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट नाउ? आई एम हैविंग वन वैल्यू, आई एम हैविंग वन वेरिएबल, एंड आई एम हैविंग अ वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू। मुझे वैल्यू भी स्टोर करनी है और वेरिएबल भी स्टोर करनी है, दोनों चीजें मुझे साथ में लेके चलनी है। देन वी आर हैविंग डिक्शनरी। Okay. And what is your variable? Variable is known as keys, and value is nothing but your variable value, जो भी values, that is it. So that is your dictionary. So how you can represent dictionary? Dictionary is represented by curly braces. Dictionary is represented by curly braces, and each key value pair is separated by colon. Let me give you one example, then आपको more idea, ज़्यादा idea होगा। D is equal to curly braces is used. I have used curly braces. Key value pair. First I have given key as me. What is my value? Value is, so ये क्या है? This is your first key value pair. ये हमारा पहला key value pair. So this is your key. Key means variable name, and with respect to this variable, this is my value. Same as it is second key and second value. Just a minute. Same as it is college. This is my second key. And second key is also having second value. What is my value? Something like Alma Better Rhyme. So this is what? This is nothing but your dictionary. ये क्या है? It is your, see. It is of. So this is your dictionary. Key value pair. Key value pair. This is your, this name. This name is your key. This is your value. This is your key. This is your value. So if you want to store key value pair, you will go with dictionary. तो अभी तक जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक एक एलिमेंट स्टोर हो रहा था। Now I am storing key is nothing but a variable name, and with respect to this variable name, a value which is there. तो उस वैल्यू को भी मैं स्टोर कर, so that is nothing but your, so dictionary क्या होता है, क्या ये क्लियर हुआ? What is dictionary? Is this point is clear or not? What is dictionary? Is this point is clear or not? Now, if this point is clear, there are some properties of dictionary that you guys need to know. Okay, because in interviews, these properties are very, very important. Properties of dictionary. What are these properties? Try to understand. बहुत important properties हैं ये. What are the properties of a dictionary? First property you need to understand. Dictionary keys. Dictionary keys. जो कि डिक्शनरी कीज होती हैं, डिक्शनरी कीज मस्ट बी ऑफ, जो डिक्शनरी कीज है आपकी, दैट मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप. इम्यूटेबल टाइप, इसको अनहैशेबल टाइप भी बोला जाता है. अनहैशेबल टाइप. दैट मीन्स इफ यू वांट टू टेक म्यूटेबल टाइप इन योर कीज, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. आप म्यूटेबल टाइप को कीज में नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट इज देयर. कैन आई टेक लिस्ट इन माई की? You cannot take list in your key. That is not accepted.
Okay, let me show you, let me show you examples as well, then you will be more comfortable. Suppose that I am taking list here, मैं list ले रहा हूँ 1 2 3. This list is there, with respect to this list some value I am giving. Then I am taking second one, college, which is Alma, which is Alma. अब देखा जाए, ठीक है, this is what, this is nothing but your key value pair. So this is your first key value pair, this is your second key value. तो key value pairs आ दिया. Now if I am going to print my d value, आप देखोगे एरर आ जाएगी. Why this error is coming? Because dictionary keys, जो कि ये keys होती है ना, it must be of immutable type. But आप list दे रहे हो, list is of mutable type, you will get an error. Unhashable type list, sorry, hashable यहाँ पे होना चाहिए. अनहैशेबल टाइप लिस्ट. ठीक है, तो आप सिर्फ इम्यूटेबल टाइप के डेटा को ही एज अ की यूज कर सकते. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग टपल, मैं टपल लेती हूं. इफ यू आर टेकिंग टपल, इट इज एक्सेप्टेबल, यू कैन. मैं टपल लेती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. योर की कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टपल. सी, so this is your first point. What is your first point? Dictionary key must be of immutable type. Immutable type means, immutable type means that cannot be changed. So यहाँ पे आप देखोगे, मैंने लिया लिस्ट, लिस्ट होता है म्यूटेबल टाइप. तो म्यूटेबल टाइप की कीज आप नहीं ले सकते. यू कांट टेक म्यूटेबल टाइप ऑफ कीज, यू विल गेट एन एरर इन दिस सिनेरियो. पहली प्रॉपर्टी में डाउट है तो बताओ. In first property, if you guys want to ask anything or if anything you guys are not clear, please let me. This is your first property. Simple property है, डिक्शनरी कीज जो कि एक कीज होती है, दिस कीज मस्ट बी, ये जो की है ना, इट मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप. अगर आपने म्यूटेबल टाइप की की दी है, इट विल गिव यू एन एरर डायरेक्टली एन एरर विल. सारा के इम्यूटेबल म्यूटेबल का है. तभी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सेशन में जब मैंने एक्सप्लेन किया था वही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, बढ़े आगे. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिक्शनरी कीज. डिक्शनरी कीज मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक. आप दो की सेम एक डिक्शनरी में नहीं दे सकते. अगर आप देते हो, व्हाट यू विल, if we are giving duplicate key, if we are giving duplicate key, then the older value is replaced with new value. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, replaced with new. अब इसका मतलब क्या है समझ. डिक्शनरी की मस्ट बी यूनिक. आपकी डिक्शनरी की यूनिक होनी चाहिए. अगर आपने डिक्शनरी की यूनिक नहीं दी तब क्या होगा समझ. सो इन दैट केस वॉट एवर लास्ट वैल्यू इज देयर, जो आप लास्ट की वैल्यू पेयर दोगे ना, दैट विल बी कंसीडर्ड. आपकी पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी. लेट मी शो. अगेन आई एम टेकिंग कॉलेज, अगेन आई एम टेकिंग कॉलेज एंड हियर आई एम टेकिंग समथिंग लाइक अमित. समझ लो, this college is one key, this college is one key. Now duplicate keys I have taken. Now in this scenario, what is the result you will get? Try to understand. Older value for this college key, your older value is alma mater. Now this alma mater is going to be replaced with Amit. आपकी जो पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी नई वैल्यू से. आपकी जो पुरानी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी नई वैल्यू से. लेट मी शो. सी, आपका जो कॉलेज था, अल्मा बेटर था, वो रिप्लेस हो गया अमिटिस. सो दिस इज डिक्शनरी की मस्ट बी यूनिक. अगर आप डुप्लीकेट कीज देते भी हो, इन दैट केस वॉट एवर लास्ट वैल्यू इज देयर, दैट लास्ट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर की. उस की के लिए जो भी आखिरी वैल्यू होगी वो कंसीडर. पूछो इसमें सेकेंड डाउट. इन दिस सेकेंड इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज लेट. In this second property, if any doubt is there, please let. देखो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ये प्रॉपर्टीज आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प करेंगे. When you are writing some code, there also sometimes you will understand why the errors are coming and all those things.
2 रिस्पॉन्सेस आए, बाकी अदर्स का क्या सीन है? अदर्स ओके। नेक्स्ट वन इज dictionaries are mutable in nature. Mutable in nature क्या मतलब होता है? Anybody? What is the meaning of mutable? Changeable. Yes. So that means once you are creating a dictionary, you can perform any kind of changes in changeable in, ठीक है, changeable in nature. अब कोई प्रॉपर्टी बची है क्या? डिक्शनरी कीज मस्ट बी यूनिक हो गया, डिक्शनरी कीज मस्ट बी यूनिक, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर, फाइन. एक और प्रॉपर्टीज है, डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड. क्या लगता है? डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड? एनीबॉडी? याद रखना गाइस, एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड इन नेचर. डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड इन नेचर, ये चीज आप याद रखिए. पाइथन 3.10 वर्जन्स, ओके, फ्रॉम पाइथन 3.10 वर्जन डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड इन नेचर. ऑर्डर्ड इन नेचर कब से ये ऑर्डर्ड आना चालू हुई है? फ्रॉम 3.10 वर्जन. फ्रॉम 3.10 वर्जन ऑनवर्ड्स डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड इन नेचर. इससे पहले जो था ना डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड थी, इससे पहले जो था ना डिक्शनरी जो थी वो अनऑर्डर्ड. Okay. So from Python 3.10 version, your dictionaries are ordered. That means your position. That is the reason. अगर आप पोजीशन देखो, बताओ पोजीशन सारे एलिमेंट्स की सेम है कि नहीं है? यहाँ पहले एलिमेंट पे आपका ये की वैल्यू पेयर है कि नहीं है, और सेम की वैल्यू पेयर आया है. Okay. So your positions are fixed. Okay. Positions are fixed. So from Python 3.10 version, your dictionaries are ordered in. आपकी डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज एप्लीकेबल. सोचो, क्या इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं? एनीबॉडी? ये एक एक्सेप्शन है गाइस, ये एक्सेप्शन है. ठीक है. क्या एक्सेप्शन है? ऑर्डर्ड तो है बट इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं है. ठीक है. इट इज ऑर्डर्ड बट हियर यू कैन नॉट परफॉर्म इंडेक्स. सो डिक्शनरी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग is not applicable, is not applicable with respect to आप इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं कर सकते. की वैल्यू पेयर है, दैट इज फाइन. इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एलिमेंट्स में होती है, बट यहाँ पे की एंड वैल्यू है. आप ध्यान दो, आप इंडेक्सिंग कैसे करोगे? इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, ऐसे करोगे? ऐसे हो नहीं सकता. फिर आप क्या करोगे? इस पूरे को की वैल्यू पेयर 1 मानो, ऐसे कर सकते हो. सो दैट इज द रीजन इट इज जस्ट क्रिएटिंग एन एम्बिग्यूटी. ओके, दैट इज द रीजन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नहीं होती है. ओके, सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यू कैन नॉट डू विद रिस्पेक्ट टू डिक्शनरी. ठीक है. डिक्शनरी किसमें आप नहीं कर सकते. रीजन उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर. ये की वैल्यू पेयर है. आप इंडेक्सिंग किस बेसिस पे करोगे? की के बेसिस पे करोगे, एलिमेंट के बेसिस पे करोगे, या दोनों के बेसिस पे करोगे? यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट, एम्बिग्यूटी विल बी क्रिएट. दैट इज द रीजन वी कैन नॉट. ओके, दैट इज. सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू डिक्शनरी. ठीक है. सो ये आपकी प्रॉपर्टीज है डिक्शनरी की. अब इसके बाद ऑपरेशंस बचे हैं डिक्शनरी के, दैट इज हाउ टू ऐड एन एलिमेंट, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट, हाउ टू अपडेट डिक्शनरी, हाउ टू डिलीट डिक्शनरी. दीज थिंग्स आर रिमेनिंग, सो दैट वी विल डिस्कस. इंडेक्स नाम की चीज नहीं होती है आलोक इसमें. आलोक, इट इज ऑर्डर्ड बट इंडेक्सिंग इज नॉट देयर. पोजीशन फिक्स्ड है बट इंडेक्सिंग वाला लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं. ओके, वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग हियर. ठीक है. ऑर्डर है लेकिन इंडेक्सिंग नहीं है. पोजीशन वाली कोई चीज यहाँ पे नहीं. ठीक है. इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ. ठीक है. तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है डिक्शनरी की गाइस. आफ्टर दिस योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन हैंडल, और यू कैन से नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि how you can perform addition, subtraction, like addition of an element, deletion of an element, how to update a dictionary. So that thing is pending, that we will discuss, and then we will start with operators and conditional statements. So this is the agenda that I will. So in tomorrow's session, in next session, I will try to complete dictionary and I will start
ऑपरेटर्स। मैं ऑपरेटर्स कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं नेक्स्ट सेशन। क्लियर एवरीबॉडी? व्हाट इज द थिंग आई एम गोइंग टू फॉलो? आप किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ लो। एनी डाउट इज देयर प्लीज लेट मी। तो डाउट्स लेट्स प्रिपेयर अ कंपैरिजन टेबल विद सेट टपल विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है आलोक, मैं कर दूंगा फिर। सर -4 to -7 int print output is empty but start value is start value more than end value, like -11 to -7 output correct please because step value same कंडीशन। हिंदी में बता दूं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग तो दो मुझे, आपने स्ट्रिंग तो दी ही नहीं है, बिना स्ट्रिंग के मैं कैसे बता दूं? आपको स्ट्रिंग दो ना। एडी दुर्गे, आपकी क्या स्ट्रिंग है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है? एडी दुर्गे, those who don't have any kind of issue they can leave this session, okay? एडी दुर्गे, are you there? Please let me know what is the string that you are having. क्या स्ट्रिंग है आपकी? हाँ, it will work because all three are fine. ये वर्क करेगा आपके बाप का। एडी दुर्गे, आर यू देयर? गुड नाइट, गुड नाइट। आप हो यहाँ पे? Answer is B into C. That is 3 2 ja 4, 4 3 ja 12 to 14. 14 is your answer. ताकि अरे 4 3 ja 12. First multiplication will be there. BODMAS rule again. BODMAS multiplication will be done first. 4 3 ja 12, 12 to 14. Okay. Please tell me which string, in which string you are getting this issue. बिना string के मैं कैसे बता दूं स्लाइसिंग यहाँ पे? स्ट्रिंग तो आप बताओ किस स्ट्रिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आर्यन आपका क्या डाउट है? स्टेटमेंट है अन्ना से क्या करना है इसमें? आर्यन, ओके। आर्यन, व्हाट्स योर डाउट? आई एम नॉट गेटिंग, यू आर शेयरिंग समथिंग। सर -4 से -7, ठीक है। प्रिंट x ऑफ -4 टू -7। अब एक चीज समझना, एक चीज समझना, सिंपल सी चीज समझना आप लोग, ठीक है? मैं एक छोटा सा नंबर लाइन बना रहा हूं, आप उससे बहुत आसानी से समझ जाओगे। -4 यहां पे होगा, -7 कुछ यहां पे होगा, ठीक है? -7 यहां, आप समझ। स्टेप वैल्यू इज क्या? बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू है यहाँ पे गाइस। व्हाट इज द स्टेप वैल्यू हियर? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट व्हाट इज माय स्टेप वैल्यू हियर? व्हाट इज माय स्टेप वैल्यू हियर बाय डिफॉल्ट? अरे -1, 1 बाय डिफॉल्ट 1 इज माय स्टेप वैल्यू। 1 इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव। अगर 1 पॉजिटिव है तो मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी? फॉरवर्ड और बैकवर्ड? It is left to right. That means I need to move in this direction. हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है। In this direction I will move. ठीक है, आप समझना। मेरा स्टार्ट ये है, एंड है ये। अरे I don't know why mouse is going like this. एंड है ये, आप समझना। क्या मैं -4 से -7 फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कभी भी -7 मिल सकता है क्या? -4 से -7, -7 पीछे ही रहेगा। -4 से इधर ही साइड में -7 रहेगा। कोई पॉसिबिलिटी है कि -7 इधर मिल जाए? कभी नहीं मिलेगा। सो यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम -4 टू -7 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई एम्प्टी टपल इज योर आंसर। इस वजह से एम्प्टी आ रहा है क्योंकि आप मूव नहीं कर पा रहे। अगर आप मूव कर पाते फिर आपको रिजल्ट मिलता, बट आप मूव नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से
क्योंकि आपका स्टार्ट है -4 और एंड है -7 और आपको मूव इस डायरेक्शन में करना है। क्या इस डायरेक्शन में कभी -7 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इस वजह से एम्प्टी टेबल यहाँ पे आंसर आ रहा। तो मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। एडी, इज इट क्लियर? ओके, आप प्रैक्टिस करना और देखो क्या होता है ना, जब हम मूव नहीं कर पाते, कोई डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते, हमें एम्प्टी टपल मिलता है। ठीक है, जब भी हम मूव नहीं कर पाएंगे ना, हमें एम्प्टी टपल मिल जाएगा। ठीक? आ, आर्यन इज आस्किंग, ये कोई है उसका टेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद क्या है? सर ओनली बुक टाइटल नीड टू कन्वर्ट इन टाइटल। ओके, ठीक है, फिर आउटपुट एस, ठीक है, आउटपुट चाहिए आपको ये। ठीक है। हम्म। हम्म, क्या करो ना यहाँ पे, कमेंट, इसको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर लूप से तो इसको कर सकते हैं आइटरेट करके, बट डायरेक्टली लेट मी चेक, डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप वी कैन डू इट इजीली, बट जो आप कह रहे हो इसको भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसे भी हो सकता है तो करते हैं। One string is given and you want this shows and डायरेक्टली विद होल सेंटेंस। अच्छा, आपको ये पूरा सेंटेंस चाहिए कैपिटल में? आप ये कह रहे हो ये पूरा सेंटेंस आपको कैपिटल में चाहिए? हम्म? एक बार कंफर्म करना आ रही ना, आप कह रहे हो ये पूरा सेंटेंस जो है ये कैपिटल में चाहिए आप? सर व्हेन आई वाज डूइंग होल कन्वर्टिंग, ठीक है, अभी देखते हैं आपका एडिटिंग। व्हेन आई वाज डूइंग होल सेंटेंस कन्वर्टिंग टू टाइटल बट द क्वेश्चन ओनली पार्ट दैट पार्ट नीड टू, अच्छा बुक नेम आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है। हम्म, ऐसे तो इसको नहीं कर सकते हैं, बट एक सजेशन यहाँ पे ये हो सकता है कि टेक्स्ट को अगर स्प्लिट कर दिया जाए, बट ये कोई फिक्स पैटर्न होगा ना कि इसी पोजीशन पे आपको बुक मिलेगी। क्योंकि देखो जहां पे पैटर्न फॉलो नहीं होता है वहां प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई पैटर्न बनेगा तभी प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करती है guys। कहीं पे रैंडमली चीजें हो रही है वहां प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे कोई पैटर्न जब बनेगा तभी हम लोग कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो पैटर्न अगर ये है कि 1 2 3 थर्ड एलिमेंट के बाद में हमको हमेशा सोर्स एग मिलेगा तो हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कैसे होगा देख, क्या करो इसको, जो स्टेटमेंट है काम कर लो। आ, अरे यार ये तो हो जाएगा, रिप्लेस फंक्शन से यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं ना, इसको रिप्लेस में डालो। अदरवाइज फॉर लूप से ये हो जाएगा। फॉर लूप से क्या है ना, आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी फॉर लूप के लिए और ये वर्क कर जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, आप क्या करो, जो आपका बुक का नेम है, ठीक है, इसको आप अपर केस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप यहीं पे इसको शॉर्ट रैंक कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए, बिना पैटर्न के ये सॉल्व नहीं होगा। एक पैटर्न होना चाहिए, चाहे जितने भी बार आपका स्टेटमेंट हो, आपका पैटर्न में या थर्ड या फोर्थ पे हमेशा शॉर्ट रैंक होना चाहिए, या फिर ये पैटर्न हो, या फिर उन्होंने दिया हो कि बुक का नाम ये होना चाहिए, तब ठीक है। ठीक है, ये कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। जहां पे पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है। ये शॉर्ट टैग रिडेम्पशन ऐसे आप कर सकते हो, अगर आपको पता है कि ये बुक का नाम है, हमको ये चीज रिप्लेस करनी, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, वरना फिर सारे में आपका होना चाहिए, आपका पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तब ये वर्क करेगा, एल्स नहीं करेगा। समझ आया?
आर्यन, अगर आपको पता है कि इस पोजीशन पे ही बुक मिलनी है, ठीक है, क्योंकि देखो पैटर्न नहीं होगा तो अभी कोई और टेक्स्ट आप ले लो, उस पे कहीं और पे बुक होगा तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। बुक का तो कोई भी नाम हो सकता है ना, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। देयर इज सम पैटर्न विच इज देयर, आपका कोई ना कोई पैटर्न होगा। पैटर्न क्या हो सकता है कि कहीं पे बुक लिखा हो, ऐसे करके बुक लिखा हो, तो आप कह सकते हो भाई बुक जहां लिखा है उसके बाद वाला जो है बुक का नेम है। ऐसे आप पैटर्न फाइंड कर सकते हो। तो बिना पैटर्न के आप चीजें नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं पैटर्न आपको फाइंड करना पड़ेगा तभी ये चीज हो। ठीक है, एडी दूर गया, आपका डाउट है, आपने लिया -11 प्रिंट x ऑफ -11 -5 -1। अब समझना इस केस में क्या होगा। देखो डायरेक्शन है बैकवर्ड, ठीक है, पहले तो नंबर लाइन क्रिएट कर दो, वी कैन मूव और नॉट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट क्रिएट अ नंबर लाइन। -11 is somewhere here, -11 is somewhere here, and here we are having something like -5, यहाँ पे हमारा -5, ठीक है। अब समझ लो बैकवर्ड डायरेक्शन है। अब आप कह रहे हो कि -5 से स्टार्ट करके -5 सॉरी -11 से स्टार्ट करना है हमको, यहां से स्टार्ट करना है। दिस इज माई स्टार्टिंग, दिस इज माई स्टार्टिंग एंड दिस इज माई एंडिंग। और डायरेक्शन इज बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन्स हमको पीछे की डायरेक्शन में जाना है। अब बताना क्या -11 से बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में कभी भी -5 मिलेगा? कभी भी -5 मिल सकता है इस डायरेक्शन में? इधर तो मिलेगा, इधर मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। तो योर रिजल्ट विल बी empty tuple is your answer, because you cannot move, you cannot move in that particular direction, that's, समझ आया? इस वजह से empty tuple आ रहा है, क्योंकि हम मूव नहीं कर सकते, we can't move in that direction, that's why your result is empty। AD Durge, is this point is clear? Any other question, doubt, या रैप करें सेशन को? Okay, okay, I think that's it for today, we'll meet in next session। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। या बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।